Check, hello. Yes. Guys, fully audible? Are we ready? Wonderful. Let's start. Yes, very good morning, my dear friends. दोस्तों गुड मॉर्निंग. वंडरफुल. बहुत दिनों के बाद आज सुबह वापस जल्दी उठ गए क्या? ठीक है, very good. So first of all, hearty congratulations, guys, for those who qualified foundation. And I'm sure in this there are two types of students. One is those who qualified foundation and came to inter. Second is those direct entry. We have given a direct entry into our examination. So now, whatever category you belong to, be it from foundation to inter or be it from direct entry scheme, I'm sure you all know that syllabus is same for everyone. अभी कुछ फर्क है क्या किसी में? And we are all now new generation inter exams. आप फर्स्ट क्लास लॉ जहाँ पे भी क्लास किए होंगे सबसे पहले आप ये सुने होंगे वेलकम टू न्यू जनरेशन सीए इंटर. करेक्ट? क्यों बोल रहे हैं सर न्यू जनरेशन सीए इंटर? New syllabus, exactly. What our ICA Institute does is basically every 10 years once they reform the syllabus. Syllabus पूरा नया लेके आ जाते. And इस बार जो नया syllabus लेके आए पहली बार इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ है कि CA इंटर लेवल पे जो 8 पेपर होते हैं वो सिर्फ 6 कर दिए. तो आपका 25% मेहनत कम हो गया क्या? इसका तो क्लैरिटी सबको है ना बेटा? ये तो बिल्कुल नहीं सोच रहे ना 25% मेहनत कम हो गया, हमारे सीनियर्स बहुत मेहनत किए पर हमको नहीं करना है. There's nothing like that, right? Wonderful. Good. First of all, welcome you all to taxation classes, my dear friends. This is Shiva Teja, a qualified chartered accountant and cost accountant. I qualified my CA way back in the year 2010. So it's almost 13 years now that I became a CA. And I'm also a cost accountant, chartered accountant and a cost accountant. And I've been training students for taxation subject across CA, CS, CMA at multiple places across India, including Pune, Chennai, Hyderabad, Bangalore, and a lot of other places. And here with you guys at Pune, face to face, to spend some very good time and to have a great learning about this beautiful subject called tax. Good. So first of all, my dear friends, सबसे पहले मैं आपको ये चीज पूछ लो आपसे, that is in this class, I want the class to be highly interactive so that it will not be a one-way communication. It should always be a two-way communication. Because one-way communication should not be like that, where you come, sit in the class, listen to the pravachan and go. वैसे तो करना नहीं है ना अपने को. अरे प्रवचन सुनने के लिए बहुत ऑप्शन है आज के डेट पे टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है दैट टाइम पास करने के लिए बहुत ऑप्शन है अपने पास. डू यू एग्री टू दैट? बोलो बेटा, क्या क्या नहीं है अपने पास यार? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट, ट्विटर, लिंक्डइन और थ्रेड्स. ये नया नया चालू हो गया वापस टाइम पास. सो वी हैव गॉट सो मेनी ऑप्शंस टुडे टू स्पेंड आवर टाइम to have some time pass. Since we have got so many options with us to do time pass, let's not do that in the classroom. Clear है सबको ये चीज? बराबर है ना? अपन सब कुछ पर्पस के लिए आए यहाँ पे. So let us all fulfill that primary purpose for which we have come all the way here. इधर तक मेहनत करके कुछ पर्पस के लिए आए तो वो पहले वो पर्पस फुलफिल कर देते. बाकी सब जो क्लास के साथ सब्जेक्ट के साथ जो चलते रहते फन, दैट इज डिफरेंट. बट फॉर द सेक ऑफ फन यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज. Correct, no friends? I'll tell two words. दोनों में फर्क क्या है बोलो बेटा? Somebody is smiling at us, somebody is laughing at us. दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है क्या? कौन सा अच्छा है? Wonderful. That thin line of difference between smiling and laughing makes the whole difference in life. पूरा जिंदगी का फर्क वही पड़ेगा कि somebody is smiling at us, somebody is laughing at us. If somebody is smiling at us, we are very happy because they gave a wonderful smile. We will smile back and feel happy. And if somebody is laughing at us, that is very painful. In the same way, when we come to the class, primary objective should be subject, learning, concept, classroom. That is most important. All this time pass activity, all that activity is all secondary, which should not be your primary purpose at all. Do you all agree to that? Everybody, सब लोग बोलो बेटा. Very good. Good. So आप सबका एग्जाम कब है? May 2024. पता है ना अपने को कितना महीना गैप है अभी? 8 महीना गैप है. दिखने के लिए लगता है 8 महीना गैप है अपने पास, बट आपको लगता है 8 महीना बहुत ज्यादा है? ठीक है, मैं रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं. आपको लगता है 8 महीने बहुत कम है? अब इसका जवाब तो है नहीं किसी के पास. सब चेहरे वैसे बना दिए. जा कम तो लग रहा है, अब ज्यादा तो क्या बोले सर. See, one thing is very clear. 8 months, whatever time we have got, it is not that it is very less, not that it is very much more also. Because this is a decent time.
इंस्टीट्यूट ने कुछ सोच के बनाए होंगे ना, इतना टाइम देंगे बच्चों के लिए, इतना टाइम देंगे पढ़ाई करने के लिए, बराबर है ना बेटा? तो ये चीज तो है कि टाइम अपने पास उतना ज्यादा भी नहीं है जितना अपना टाइम पास कर सकते, बट ये भी तो है इतना भी कम नहीं है कि अपन वो खत्म नहीं कर सकते। दोनों चीजें हैं। तो अपने को डे 1 से लेके वी शुड बी एवरी डे परफेक्टली डूइंग इट। एंड आप जिधर भी क्लास गए होंगे, फर्स्ट क्लास, सब जगह एक वर्ड तो सुने होंगे, कंसिस्टेंसी। सुने क्या ये वर्ड? 100% ना? Very good, that is true. Whichever faculty told you that word consistency, that is true. Why? I'll tell you the reason. Because first day को जो एनर्जी रहता है स्टूडेंट के पास, चलो भाई क्लास करते, सीए इंटर फाउंडेशन खत्म हो गया, और अपने दोस्त जो फ्रेंड्स जो है जो फाउंडेशन अभी भी पास हो नहीं हुआ, अभी लिख रहे, उनको बताएंगे इंटर क्लास जाके आऊंगा, फिर हम बात करेंगे, बराबर है ना बेटा? और हम उनको सब एडवाइस देंगे लाइफ में जो हमने किए नहीं। ये भी तो है ना बेटा? अगर वो स्टूडेंट आके अपने से पूछ रहा है, अरे मैथमेटिक्स में ये चैप्टर कैसा किया, वो चैप्टर अपन चॉइस में छोड़ दे, पर अपन उसको बोलेंगे ये चैप्टर में 200 प्रॉब्लम सॉल्व किया। कितना? 200 प्रॉब्लम। अपन ऐसा जवाब देंगे, और अपन जो भी जवाब देंगे वो बेचारा सुनेगा। क्यों? क्यों बेटा? क्योंकि हम पास हो गए। सिंपल सी बात है। वंस वी पास्ड, व्हाटएवर वी से इज फाइनल। करेक्ट फ्रेंड्स? एवरीबडी डू एग्री टू दैट? Everyone? If somebody is giving some philosophical advice to you, if he is worth it, we'll listen to it. If he is not worth it, we will not listen to it. And when we'll decide is worth it, when he's achieved something. In the same way, your friends are listening to you only because you pass foundation. And tomorrow if somebody has to listen to you, somebody has to respect you, what you should do? You should pass inter. Then your real game starts. And one last thing I'll tell before I directly get into the subject, because motivation तो आपको बहुत मिलेगा ये बिल्डिंग में, सब लोग मोटिवेशन बहुत करेंगे यहाँ पे, बट सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलूंगा, then I'll proceed to my subject. That is very clearly, my dear friends, you will find chartered accountancy students who are leaving the course at foundation level, but you will never find a CA students who is leaving after CA inter. The reason because the most toughest level to crack at CA level is not foundation, it's not final, it is inter. क्यों बोलूं? उसका रीजन भी बोलता हूं मैं क्यों। फाउंडेशन 3 बार लिखने के बाद बच्चे को लगता है यार छोड़ा यार, सीए अपने बस की बात नहीं, दूसरा कुछ कर लेते, वो चले जाएगा छोड़ के कुछ और करेगा, सोचेगा बीकॉम करते, एमबीए करते, कुछ तो करेंगे लाइफ में। बट जब सीए इंटर जो टफेस्ट लेवल पास करेंगे ना बॉस, ऑलरेडी 2 स्टेजेस पास कर लिए, बच्चा सिर्फ एक ही स्टेप, और एक स्टेप के पीछे हटेंगे क्या हम? पूरी जान देके मेहनत करके खत्म करेंगे ना बेटा? Everybody, yes or no, friends? We will put our best effort possible and ensure that we will pass CFL in the first attempt. And the first attempt is always the golden attempt of your life. Because there is no pressure, there is no tension, there is no, what do you call, something pulling us back. Correct, no? अब मैं नहीं बोलता कि टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है, बट पॉजिटिव टेंशन है, पॉजिटिव प्रेशर है। बट सेकेंड अटेम्प्ट वाले से पूछो, मालूम पड़ता है कि वो टेंशन क्या लेवल का टेंशन रहता है। बराबर है बेटा? यस एवरीबॉडी? चलो गाइस, बहुत हो गया मोटिवेशन, अपन सब्जेक्ट पे आते हैं। अभी बोलो, आपने कितने सब्जेक्ट्स है अभी सीए इंटर में? बोलो, टेल मी गाइस, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू हैव गॉट इन सीए इंटर? 6 subjects. And which paper I'm going to deal with you? Taxation. Wonderful. And taxation is in group 1 or group 2? Group 1. And one thing is very clear that now at CA inter level it doesn't matter whether it is group 1 or group 2, because आपको जब आर्टिकलशिप करना है आपको 2 ग्रुप पास करना ही है। बराबर है? यस एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो, आप कमेंट करो, कुछ तो दिखेगा मुझे। राइट, सो ये तो क्लियर है अपने को 2 ग्रुप के पास ही आर्टिकलशिप करना है। कितने साल का आर्टिकलशिप? आर्टिकलशिप मतलब क्या करते हो उसमें जाके? मैं ये क्वेश्चन पूछने का बहुत रीजन है मेरे पास, तो सोच के बोलो, आर्टिकलशिप में क्या करेंगे? क्या करेंगे 2 साल जाके सीए के पास? क्या लगता है आपको क्या करेंगे? स्टाइपेंड लेके आएंगे? हाँ, तो क्या करेंगे 2 साल? ऑडिट कैसा करते? हाँ ठीक है, और wonderful, that is what is the answer, that is the reason why articleship is known as practical training. आर्टिकलशिप का दूसरा नाम है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एक्चुअली उसका ऑफिशियल नाम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही है, पर अपन बोलते हैं आर्टिकलशिप। अपने को आदत हो गया क्योंकि अपन अलग दुनिया में जीते, सीए वाले सब अपने से पूछते कौन सा कॉलेज में पढ़ रहा है बेटा,
अपने को उसको समझाना पड़ता है, नहीं मेरे भाई हमारा कॉलेज नहीं होता है, हमारा कोचिंग क्लास होता है, सुबह एक क्लास है, दोपहर में एक क्लास है, फिर लंच है, फिर शाम में भी क्लास है, फिर रात में जाते हॉस्टल देखते, खाना खाते, सो जाते, फिर सुबह चालू। उसको समझ में नहीं आता, फिर मिलेगा 15 दिन बाद, फिर पूछेगा सेम क्वेश्चन। बराबर है ना? अपन अलग चीज, अलग लाइफ जीते यार, एंड वी डू समथिंग डिफरेंट बिकॉज वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। सिंपल, अपनी लाइफ अलग है, उनसे कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते आप। जो सिर्फ बीकॉम कर रहे हो उसका लाइफ अलग है, अपना लाइफ अलग है। नाउ कमिंग बैक टू डिस्कशन, व्हाई डिड आई से दैट वर्ड practical training? The reason because whatever you study in the classroom, in the classroom environment, with examples what you listen from the respected faculties for different subjects, that you will see practically. बराबर है ना? तभी तो आप सीए बन के बाहर आने के बाद इतना तो वैल्यू है। सी द ओनली रीजन व्हाई यू कम टू सीए कोर्स इज ओनली 2 reasons. Everybody, चाहे कुछ भी रीजन बोलो, फंडामेंटली पीपल कम टू सीए ओनली फॉर 2 reasons. रीजन नंबर 1, बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व। रीजन नंबर 2, रेस्पेक्ट इज इन्वॉल्व। और क्या चाहिए यार जिंदगी में? कोई कोर्स में 2 चीजें मिल रहे हैं। बराबर है ना बेटा? 2 चीजें मिल रहा है ना बेटा, पैसे भी मिल रहा है, ऊपर से रेस्पेक्ट भी मिल रहा है, और क्या चाहिए? 2 things are coming in a course like this, which is very much deserving. करेक्ट नो? और इस कोर्स में ऐसा है क्या आपका रिलीजन देख के, कास्ट देख के मार्क्स ज्यादा देंगे कम देंगे, ऐसा कुछ है क्या? रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितनी बड़ी बात है वो, मतलब ये कोर्स का इतना इंपॉर्टेंस समझो आप। बराबर है ना बेटा? Now coming back to this beautiful subject of taxation, my dear friends, why I told about the word practical training is because, friends, this is one such subject which will definitely be at the back of you till the end of your life. Not till the end of CA, till the end of your life. The reason because everybody in India, whoever is earning income, is required to pay some tax, subject to some limit. बराबर है? एवरीबडी, वो लिमिट क्या है वो सब पढ़ेंगे हम, आ जाएंगे उस पर डिस्कशन पे, उसका कोई जल्दी नहीं है। क्लियर है ना बेटा? एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइमा फेसी डस 3 एक्टिविटी। 3 काम सबसे ज्यादा करता है, एक तो अकाउंट्स, दूसरा है ऑडिट, तीसरा है टैक्स। समझ में आ रहा है बेटा? एवरीबडी माय डियर फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस फील्ड्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्कोप से, बट मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज these 3 works: accounting, auditing, taxation. And a chartered accountant cannot tell the statement, I don't know tax. He cannot tell that. बोल सकते हैं क्या टैक्स नहीं आता अपने को? अरे अपना एक्सपर्टीज है ही टैक्स, अपना कोर एरिया ही टैक्स है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन कोर एक्टिविटी इटसेल्फ इज टैक्सेशन। हाउ कैन ही टेल आई डोंट नो टैक्स? उनको टैक्स तो नस नस में होना चाहिए यार। ब्लड and our bread, butter, everything is tax only. How can we say we don't know tax? Correct? Everybody, my dear friends. Now let me tell you one point very clearly, that I will take a challenge in the first day of the class itself, that by the end of the classes, every sections in income tax law will be in your control, and some of them would have listened to their friends or seniors or whatever it is. They would have already told you अपने क्लास में क्या लेवल का डिस्कशन होता है और क्या लेवल पे हम सेक्शन डिस्कस करते। The reason because I myself am a practicing chartered accountant. I have an office at Hyderabad, and we have got branches at a couple of places. The only reason I'm telling that to you because since I am a practicing chartered accountant, I know very well कि practical हम इसको कैसा use करते। So I will bring all the practical examples in the classroom so that आपको ये जो theoretical knowledge है, practical blend के साथ कैसा समझना है उसको, वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो आप आर्टिकलशिप में जब जाएंगे, आप भले किसी को याद करें ना करें, मुझे तो याद करेंगे, ये तो गारंटी है। क्योंकि टैक्स का काम तो 101% आपसे कराएंगे, चाहे आप छोटा फर्म में जाओ, बड़ा फर्म में जाओ, मीडियम फर्म में जाओ, बिग 4 में जाओ, किधर भी जाओ, यू कैन नॉट मूव आउट ऑफ टैक्स। वेरेवर यू गो, टैक्स विल फॉलो। क्लियर है एवरीबॉडी? नाउ दिस टैक्सेशन पेपर इज बेसिकली, माय डियर फ्रेंड्स, पेपर 3 ऑफ योर CA इंटर ऑफ ग्रुप 1। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? And in paper 3, you have got 2 components, 3A and 3B. बराबर है बेटा? What is 3A? 3A is direct tax, 3B is indirect tax. Clear? And this 3A part, which is worth for about 50 marks. पता है आपको ये चीज? सिलेबस तो पता है ना आपको? सिलेबस मतलब चैप्टर्स क्या क्या होना है पूछ रहा हूं मैं, मतलब कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट है, ये तो पता है ना बेटा आपको? इतना बेसिक होमवर्क तो किए ना आप?
हाँ गुड. तो 50 मार्क का जो पार्ट है दैट इज डायरेक्ट टैक्स which will be dealt by me. I will teach you that 50 marks of direct taxes for you. Clear, my dear friends? And that will take for about 55 to 60 lectures is what it takes of 2.5 hours each lecture. It will take around 55 to 60 lectures. So positively, before Diwali holidays only, we'll complete it. Because generally in Pune, they give almost about a week time for Diwali holidays. सुने होंगे ना आप लोग ये चीज? तो अपने दिवाली से पहले आराम से खत्म हो जाएगा. ठीक है ना बेटा? Everybody? Now, one more important thing. That is at CA final level. कितना पेपर है CA final पता है आपको? नहीं. कुछ होमवर्क नहीं किया उसके ऊपर, कुछ आइडिया भी नहीं है. ये बोल रहा है सर पहले ये तो पास होने दो, फिर अपन उस पर दिमाग चलते. अरे नहीं ना दोस्त, पता तो होना चाहिए. The reason why I asked this question is in CA final, my dear friends, you have got totally 6 papers, 100 marks each paper. ठीक है? I'm not interested to tell you about CA final में क्या क्या subject है क्या है, but what I want to tell you very clearly is that when I say that CA final you have got for 6 papers, out of that, my dear friends, 1 paper is direct tax, 1 paper is indirect tax, and there direct tax is for 100 marks, indirect tax is again for 100 marks. I'm sure you understood why I told this to you. क्यों 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 क्या समझ में आया इसमें आपको? बोलो ना बेटा, क्या लग रहा है आपको इससे? एग्जैक्टली तो ये लेवल पे सीए इंटर लेवल पे ये अच्छे से पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज सीए फाइनल बेटा आप ये समझो, जो 50-50 मार्क में सीए इंटर में है, फाइनल में आते क्या हो रहा है? एक 100 मार्क का हो रहा है बेटा. तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है. दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू 10-15 मिनट पहले, कि आपको सीए होने के बाद टैक्सेशन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हमको टैक्स नहीं पता. समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? एवरीबॉडी सर. So at CA final level, you have got direct tax for 100 marks, indirect tax for 100 marks. That clearly shows the importance of these subjects, which you cannot afford to compromise. Clear? Everybody? Now, next point, my dear friends. Listen very clearly. When I say 100 marks paper, you will get 2 sections. मतलब एग्जाम में भी आपको अलग अलग 2 पेपर देंगे. 3A का पेपर अलग, 3B का पेपर अलग, DT का पेपर अलग से देंगे, IDT का पेपर अलग से देंगे. पहले आपको कौन सा लिखना है आपकी मर्जी है, बट आपको मिलेगा तो सिर्फ 3 घंटा ही. समझ में आ रहा है आपको? मिलेगा तो 3 घंटा ही, पर दोनों पेपर अलग अलग देंगे. ऐसा एग्जाम में हो नहीं सकता कि DT का एक क्वेश्चन लिखेंगे, फिर IDT का दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर DT लिखेंगे, फिर IDT लिखेंगे. वैसा हो नहीं सकता. दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा कंपल्सरी एग्जाम में. क्लियर है? सबको समझ में आया यहां तक? राइट. आपका पेपर पैटर्न क्या होगा बेटा? कोई आइडिया इसके बारे में? बोले लॉ क्लास में बताया आपको, लॉ क्लास में इसके बारे में नहीं? फ्रेंड्स, आपकी पेपर पैटर्न हर सब्जेक्ट में यू विल हैव 30%. 30%. 30%. This is what is the problem. This is what is the real problem, where student thinks that 30% is MCQs. 4 ऑप्शन देंगे अपने को ABCD, 4 में से एक चूज करना है, कुछ बड़ी बात नहीं है. But the point is what you know, ICA has clearly told that 30% is not MCQ. 30% is case study based MCQ. स्टूडेंट बोल रहे हैं अच्छा ये तो सुने नहीं सर आज तक हम लोग. ये आपका आईसीए का ही है, ठीक है, कुछ दूसरा नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको. जस्ट 1 सेकेंड. इंटरमीडिएट कोर्स 6 पेपर्स. ये पढ़ो बेटा, 3.1 से क्वेश्चन पढ़ो. व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन? यहां पे लिखा क्या? सिर्फ टैक्सेशन का करके लिखे क्या? इट्स अ पैटर्न फॉर व्हाट? All subjects. See that very clearly. 30% is what beta? Case scenario or case study based MCQ. सिर्फ MCQ लिखे क्या इधर? ये बड़ा प्रॉब्लम है. स्टूडेंट सोचता है सिर्फ MCQ है, बस 4 ऑप्शन देंगे, ABCD सेलेक्ट करेंगे, काम खत्म. समझ में आ रहा है?
And why I'm telling this point to you, why, dear friends, let me tell you honestly, that whenever we say that it is a case study based MCQ, what happens actually is that they give some situation, they give some circumstance, पूरा story बताएंगे, राम ने ऐसा किया, रावण ने ऐसा किया, ये कहानी में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, पूरा कहानी बताएंगे आपको. वो कहानी पूरा देने के बाद below they'll give 5 questions based on that whole story, and in that whole story what they give, they will combine multiple chapters. समझ में आ रहा है आपको? फॉर एग्जाम्पल आपका लॉ क्लास खत्म हो गया, इसलिए मैं लॉ का बोलूंगा 1 मिनट. दैट इज कॉर्पोरेट लॉ, अलग अलग टॉपिक्स है उसमें. अदर लॉस, उसमें भी अलग अलग टॉपिक है. ये लोग क्या करेंगे, उसका एक प्रोविजन, इसका एक प्रोविजन, दोनों कंबाइन करके एक सिचुएशन बना के दे देंगे, उसके ऊपर एमसीक्यू देंगे एग्जाम में. तब आप मुझे बोलो अभी एमसीक्यू बहुत इजी है क्या? एमसीक्यू आंसर करने के लिए क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट चाहिए. इतना आसान नहीं है एमसीक्यू कि हम बोलेंगे कि कुछ भी लिख देंगे एबीसीडी हो जाएगा, 30% मार्क्स तो इधर ही आ जाएंगे. नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं. ये केस बेस्ड एमसीक्यू है. पूरा सिचुएशन देके सिचुएशन पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, और सिचुएशन ऐसा बनाएंगे जिसपे सब कुछ रहेगा. क्लियर है ये चीज आपको? समझ में आया आपको? तो एग्जाम पैटर्न क्या है अपना? 30% प्लीज, 30% case scenario, case study based MCQ, and 70% is what beta? In all the 6 papers. And सबसे बेस्ट चीज क्या है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इज देयर नेगेटिव मार्किंग इन MCQ? हाँ, ये तो स्टूडेंट को क्लैरिटी है. गुड. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन MCQ, तो जय माता दी कभी कभी काम कर सकते हैं, कभी कभी काम कर सकते हैं. करेक्ट ना? स्टूडेंट का अपना अपना टैलेंट होता है. स्टूडेंट बोलता है 10 MCQ आया, मैं एक काम करूंगा 10 का पूरा ए सेलेक्ट करूंगा, 10 में शायद 1-2 तो ए होंगे. क्या अगर पूरे के पूरे बी है तो तब क्या करेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना यार, हम कुछ भी सेलेक्ट करेंगे. एंड इट सी इंटर लेवल यू कांट प्ले दैट गेम्स. फाउंडेशन तक ठीक है सब चलता है, बट इंटर लेवल पे योर लेवल स्किल सेट शुड गो अप. क्लियर? एंड व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया गाइस? अरे यार कोई जवाब ही नहीं दे रहे क्या इसके ऊपर? 40%, 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट. एंड ग्रुप 1 में कितने पेपर्स है? 3, मतलब 120 आए तो हो जाएगा क्या? हाँ, तो अपने को लाना तो 150 है ना, बोलने के लिए 40 मिनिमम है, बट अपने को लाना है 150. एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स अक्रॉस इंडिया वेयर पीपल गॉट मोर देन 150 बट स्टिल फेल्ड. व्हाई? बिकॉज कोई सब्जेक्ट में 40 आए नहीं. Correct, no? And there are so many examples where people pass in all 3 subjects but still failed. Aggregate has not come more than 150. Correct, no friends? So we have got 2 challenges. Challenge number 1, in every subject we have to score minimum 40, and aggregate we have to score 150. बराबर है ना बेटा? Everybody. So इसके लिए क्या जरूरी है? In every group we have to target 1-2 subjects where we will score more marks, and in that group 1 I will ensure that that paper will be tax only for you. With all my practical knowledge what I have gained in last more than 10 years by teaching more than 25,000 students, all that practical knowledge I'll bring into the classroom, because I'm a fellow chartered accountant having more than 10 years experience in practice. I'll bring all that into the classroom so that we'll have a great level of learning. सबको क्लियर है ये बात? Everybody, sir. And it's my responsibility to ensure that you will love tax the most. That is my job. वो मेरे पे छोड़ दो. वो कैसा होगा? एक हफ्ते के बाद आप खुद मुझे बोलेंगे. एक हफ्ता भी नहीं, 3-4 दिन में बता दूंगा मैं. You will see the picture. ठीक है? Clear है बेटा? Right. Just 1 minute. I'll just tell you that in the class, I'll give you 2 modules, guys. That is module 1 and module 2. I'll give you 2 books. This is basically for our class reference and class understanding. In the class, what our pattern will be that when I'm discussing the concept, I don't want anybody to write anything. When I'm discussing the concept, after I discuss the concept, I will give you short summary notes in the class itself, which I will make you write in the classroom. Clear? Everybody? So you all have to carry one separate book for income tax, where I'll make you write in the classroom some summary points. ठीक है ना बेटा? Everyone? That is 2 modules what I'll give you for the classroom. 2 modules because in one module we have got some 7 to 8 chapters. In this we have got some 10 chapters. Student is telling you छोटा क्यों है फिर? इसमें सब छोटे-छोटे chapters है. ठीक है ना बेटा? That is one thing.
And second, I'll also give one more book called Question Answer and MCQ book, which contains all question and answers with MCQs. When I say MCQ, what kind of MCQs are also there? Case study based MCQ. And ICA क्या करते हैं बेटा? सुन लो ये भी. When I say 30% is MCQ, out of 50 marks, कितने marks MCQ आएंगे टैक्स में बोलो? अपने डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क का है, तो MCQ कितने मार्क्स आएंगे? कैलकुलेटर चाहिए क्या? 15 मार्क MCQ आएंगे. 15 मार्क में ये लोग क्या करते हैं? 10 मार्क केस स्टडी MCQ देंगे और 5 मार्क अलग अलग MCQ देंगे. समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 15 केस स्टडी MCQ देंगे, एक दो केस स्टडी देंगे जिसपे 10 क्वेश्चन पूछेंगे और एक 5 अलग इंडिपेंडेंट MCQ देंगे. क्लियर है ना? दैट इज दिस बुक ऑफ क्वेश्चन आंसर MCQ बुक. एंड इसका बुक का लास्ट में काम रहेगा आपको, अभी नहीं, समवेयर इन मार्च और अप्रैल. दैट इज फॉर योर रिविजन. इट्स अ शॉर्ट समरी बुक. ठीक है? एंड बियॉन्ड दिस what we'll write in the classroom will be full and final, because we will write lot of interesting points in the classroom to get complete clarity of the concepts. Clear hai sabko? And class mein I want 100% participation, because when we are more active, you will enjoy the class, I'll also enjoy the class, because both of us should feel happy that we are sitting in this classroom. Agreed? Everybody? Let's start, guys. Bas khatam. We will get into the work now. Let's start our job. Are we ready? Friends, shall I start? Everyone? Good. So I'm going to teach you, my dear friends, direct tax, which is paper 3A, my dear friends, which is worth for about 50 marks. Now, first of all, I've got one important question. Tell me properly, guys. Heard of one word called democracy, beta? बोलो बेटा. चलो दोस्त बोलो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जवाब देना पड़ेगा यार, ऐसा बैठे तो नहीं होगा. अरे डेमोक्रेसी वर्ड सुने नहीं सुने? तो क्या है डेमोक्रेसी? हाँ, पॉपुलेशन, पीपल्स रूल. और कोई? हाँ, लोग. ठीक है. So basically, my dear friends, democracy is nothing but we are ruled by our own elected representatives. सुने ना words? By the people. हाँ बोलो अभी. For the people, of the people. Correct? Heard these words? So basically, we are ruled by our own elected representatives. That is nothing but democracy system. We are living in such a country where we have got democratic rule. After Modi ji cannot tell, there is my relative of mine, he will become PM next. शुरू बोल रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है? अरे बहुत कंट्रीज में होता है बेटा ऐसा. In countries like Dubai, Korea, so many countries, whatever they tell is final. That's called king's rule. It's called as monarchy system. समझ में आया क्या? King will tell, अगला king ये, कोई बोलेगा नहीं, तू आ जा इधर, तू आ इधर पहले, बस. समझ में आया क्या बेटा? Everyone? Now, why did I start about the word democracy? The reason being, my dear friends, there are 5 pillars of democracy. How many pillars are there for democracy? The 5 pillars of democracy are legislature, executive government. Need not write, I'll make you write, just listen first. Legislature, executive government, judiciary, press, comptroller and auditor general. It is not controller, my dear friends. The word is what? Comptroller. Come on, my dear friends. What are the 5 pillars of democracy? First one. Come on, what are the five pillars? First one. Legislature, what they do is, my dear friends, they basically frame the laws. What do they do? Frame the laws. What is the second one? Executive government, what they do is they implement the laws. समझ में आ रहा है बेटा सबको? Come on, what is the first pillar? Legislature. What does legislature do बेटा? Frame the laws. मतलब ये law बनाते basically. Who is executive government? Implement the laws. तो समझ में आ रहा है ना बेटा? अरे सिंपल सी बात है यार. अब सबको पता है कि गवर्नमेंट कुछ रूल बनाती है,
इंप्लीमेंट करने वाले नीचे उनका सिस्टम जो रहेगा वो इंप्लीमेंट करेंगे ना. अरे सर मुझे ये बात बोलो, अगर मोदी जी बोल दिए कल से अगर हेलमेट नहीं है, चालान इज 1000 rupees, will he come stand and collect? No, there is somebody who is implementing that, right? Everybody. So what is the first pillar of democracy? Legislature. What do? Frame the laws. Second one, executive government. What do? Implement the laws. Third one, judiciary, my dear friends, they interpret the laws. Come on friends, what does the judiciary do? When I say interpret का मतलब क्या है बेटा? बोलो interpret का मतलब क्या है? What does the word interpret mean? Who understands? Can somebody explain this? Legislature क्या करते बेटा बोलो? Frame the laws. Executive government क्या करते बेटा? Implement the laws. तीसरा वर्ड क्या है? Judiciary. Judiciary मतलब कौन आता है इसमें? Courts. Wonderful answer. Court. High Court or Supreme Court or Sessions Court, Judicial Court, whatever court it is. What are they doing? Interpret the laws. Interpret the law मतलब सिंपल सी बात है बेटा. अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट पढ़े हम, आपको उसका मीनिंग कुछ कम्युनिकेट हुआ, मुझे उसका मीनिंग कुछ और कम्युनिकेट हुआ, पर अपन दोनों में से कौन सही है, कौन बताएंगे? Judiciary. Because what they are doing is interpret the laws. Friends, clear? So what is the first one? Come on. Legislature. What does legislature do? Frame the law. Second one, executive. What does executive government do? Implement the laws. Third one, judiciary. Judiciary क्या करते बेटा बोलो? Interpret the laws. Fourth one, press. Press का actual काम है echo public opinion. Of course, प्रॉब्लम क्या है? प्रैक्टिकली वो खुद अपना ओपिनियन देते हैं, वो अलग बात है, बट प्रेस का एक्चुअल काम ये है कि echo what my dear friends? Public opinion. Friends, getting clarity everybody? चलो what first one? Just 1 second. कुछ क्वेरी चल रहा है. Yeah, so what are first, my dear friends? What are 5 pillars? First one, legislature. What does legislature do? Frame the law. Second one, executive government. What does executive government do? Implement the laws. Third one, judiciary. Judiciary क्या करते बेटा बोलो? Interpret the laws. Next one, sorry, what does press do? Echo public. Last one is, my dear friends, comptroller and auditor general. What is that word? Comptroller and auditor general. So name only says it is not controller, it is comptroller. Comptroller and auditor general, what he do is basically, my dear friends, this particular person is like a watchdog for public funds. Come on, my dear friends, what does he do? He is like what, sir? Watchdog for public funds. Sir, simple si baat hai, sir. Whenever we are going on highways, we stop in between and make some payment. What is that? Exactly. We pay something called toll charges. Toll charges is a revenue for the government. बोलो बेटा. और गवर्नमेंट क्या करेंगे? वो पैसा जेब में रख लेंगे? नहीं, क्या करना पड़ेगा उनको? They have to utilize for the welfare of the country. Now, who will check whether they are utilizing properly or not? Comptroller and auditor general. अभी आपको समझ में आया भाई साहब क्या करेंगे? He is a government guy who will check whether the funds are utilized properly or not for that specified purpose. Clear है बेटा? Everybody? बेटा कभी कभी रोड का कुछ रोड पे काम हो रहा है या कुछ रोड पे कुछ बना रहे, वहां पे एक बोर्ड लगे हुए रहते, कभी देखे तो your taxes are at work. Did you see any time? कभी कभी गवर्नमेंट क्या करते हैं, when they are laying one road or doing some infrastructure activity, they'll put one small board, your taxes are at work. मतलब बोल रहे भाई साहब तुम्हारा पैसे से तुम्हारा काम कर रहे, इज्जत से कॉपरेट करो. अरे बराबर है ना बेटा? और जो अपने पैसे अपने को बेनिफिट मिल रहा है, ये बराबर पैसे खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन चेक करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. सबको क्लियर है बेटा? दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग व्हाट अ स्टूडेंट शुड नो. दैट्स व्हाई आई टोल्ड दिस. चलो बेटा, व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी? बोलो.
Bolo beta. Everybody. Legislature. What does legislature do? Frame the laws. Second one. Executive government. What do they do? Implement the laws. Next one. Judiciary. What do they do? Interpret the laws. Next one. Press. Echo public opinion. Last one. Comptroller and Auditor General. Some of them will tell controller. Controller nahi hai bhai wo. Comptroller. In short, we can call it as C and AG. C and AG. Comptroller and Auditor General. क्या करते हैं वो? Watchdog for public funds. One last time beta bolo. What are the 5 pillars of democracy? Legislature, executive government, judiciary, press, comptroller and auditor general. Clear, friends? What does legislature do? Frame the laws. Executive government, implement the laws. Judiciary, interprets the laws. Press, echoes public opinion. Last one, watchdog for public fund. Last भाई साहब का नाम क्या है? हाँ. Comptroller and auditor general. सबको clear है ये बात? Now friends, coming to tax. First of all, what is tax? Can somebody tell the answer? Don't tell 100 marks paper. Please. दोस्तों बताओ, what is tax? अरे कुछ तो जवाब दो यार. क्या लगता है आपको टैक्स क्या है? यस सर, बोलो टैक्स क्या है? सम पार्ट ऑफ रेवेन्यू पब्लिक गिवन टू गवर्नमेंट. यहाँ पे जितने भी लोग बैठे सबको आंसर पता है कुछ ना कुछ. अरे शर्मा क्यों रहे यार, फिर आंसर बोलना यार. ऐसा थोड़ी है कि सही आंसर दिए तो भारत रत्न, गलत दिए तो बाहर. ऐसा तो नहीं ना. जवाब दो यार, पार्टिसिपेट करो. सी व्हाट इज टैक्स? Tax is basically a basic source of revenue to the government. In order to run the system of the country, government requires some revenue. And that revenue is coming from public in the form of tax. Now tell me, when Shiva Teja is earning income, I am paying tax. Can I tell government, मैं pay नहीं करूँगा, जा? Can I say? Why I can't say? That you tell. Why? Why I can't say? It's our duty to pay tax. Who told? हाँ वही पे आ रहा हूं मैं. इसके लिए पूछा मैं क्वेश्चन हो. Who told? Who told it is our duty to pay tax? Law. Which law? Income tax law. Again answer. Which law told? Income tax law. Now who gave power to government to collect income tax? Constitution of India. Wonderful my dear friends. देखे घूम फिर के कहां पे पहुंच गए अपन. बैठे इधर गए postures तक. We are sitting here, we went to tell constitution. That is important because, achha, by the way, what is constitution? Some are telling constitution means constitution. अरे बोलो यार, constitution क्या होता है यार? कौन बनाए constitution? हाँ, Dr. Ambedkar basically. It's basically the primary law of India which gives guidelines for any law coming in India. इंडिया में कुछ भी लॉ लेके आना है, every power is coming from constitution only. Correct, my dear friends? Everybody, sir. Now in constitution, my dear friends, you will find article numbers. What do you find? Now article 265 of the constitution says, no tax shall be levied or collected except by authority of law. चलो बेटा, क्या लिखा मैंने? No tax shall be what? No tax shall be levied or collected except by authority of law. That means no tax shall be levied. Levied matlab impose. Levy matlab impose. Or collected means actually taking. No tax can be imposed or collected except by authority of law. That means unless law gives power, government has no right to take tax. Now who gave power? For that, what they have done is, my dear friends, in article 246, in 7th schedule,
Which schedule beta? 7th schedule. They basically gave 3 lists. The 3 lists are union list. वो पता है आपको ये चीज? कहाँ पे सुनी है? और लॉ में सुबह सुबह सुन लिए क्या? अच्छी बात है. Union list, state list, concurrent list. Union list contains those matters. Union list contains those matters on which power is there with central government. State list contains those matters on which power is there with state government. Concurrent list contains those matters on which power is there with both. मतलब दोनों में से कोई भी. दोनों में से कोई भी क्या? नहीं, दोनों मिलके. Concurrent list contains those matters in which center and state together will take the decisions. बराबर है बेटा? Everybody sir, what are 3 lists? Union list, state list, concurrent list. Now union list contains what matters? Union list contains those matters on which power is there with central government. Now state list, state government. Concurrent list, both central and state government. बेटा बोलो समझ में आ रहा है क्या? Everybody my dear friends. Now which schedule talks about these 3 lists? 7th schedule. Of which article number? 246. Everybody getting clarity? Now tell me, what are the 5 pillars of democracy first? Legislature, executive government, judiciary, press, comptroller and auditor general. First person frames the laws. Next guy implement the laws. Third person interpret the laws. Fourth guy echo public opinion. Last person watchdog for public funds. सबको क्लियर है यहां तक? अब मुझे बताओ, आर्टिकल 265 says what? No tax shall be levied or collected except by authority of law. And constitution, which is schedule they gave 3 list? 7th schedule. What are 3 list? Union list, state list, concurrent list. Now union list contains what matters on which power is there with central government. State list, state government. Concurrent list, both central and state government. सबको clear है? Now tell me guys, in paper 3A, 50 marks what we are going to study, what we are studying? In paper 3 we have got 2 parts, no? 3A and 3B. 50 mark, 50 mark. 3A 50 mark में क्या पढ़ने वाले हम? Direct tax. And direct tax is nothing but your income tax what we are going to study. Correct? Income tax कौन से लिस्ट में? क्या लग रहा है आपको? सर गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग इनकम टैक्स. नो, अरे गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले रहे नहीं ले रहे हैं? वो पावर यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया. कहीं से तो पावर आना चाहिए ना. मैं क्या बताया थोड़ी देर पहले आपको, कहीं ना कहीं से पावर आ रहा है गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट करने के लिए. अगर गवर्नमेंट शिवा तेजा के पास आके बोल रहा है, शिवा तू टैक्स भर, मैं ये तो नहीं बोल सकता चल फुट. ये बिल्कुल नहीं बोल सकता, बिकॉज दे हैव गॉट सम पावर. हु गेव दैट पावर? कॉन्स्टिट्यूशन इन सम लिस्ट. Now income tax is in which list? बोलो. महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आप इनकम टैक्स पे कर रहे. वाह, क्या लग रहा है आपको? फ्रेंड्स, एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर of union list deals with the concept of income tax. So now tell me, income tax is levied by whom? Central government or state government? Collected by whom? Central government. अरे income tax is levied by center only, collected also by center only. But आप लोग जो सुने आधा आधा सुने. एक्ट में क्या बोलता है? Center will levy income tax, center will collect income tax. Out of that amount, some amount they will give it to states. कौन देता है ऐसा? सेंटर देता है. जो टैक्स पे कर रहा है वो दे रहा है क्या? थोड़ा तू ले ले, थोड़ा तू ले ले, ये तेरा ये मेरा, ऐसा शेयर कर रहे क्या? समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा शेयर कर रहे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हम जो भी पे कर रहे पूरा सेंटर को ही पे कर रहे. सेंटर उसमें से थोड़ा शेयर निकाल के स्टेट को दे रहे. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ समबडी इज आस्किंग यू हु इज लेविंग इनकम टैक्स, विल यू टेल स्टेट? हु इज लेविंग इनकम टैक्स? सेंटर. हु इज कलेक्टिंग इनकम टैक्स? Center. But center is sharing with state. But it is levied and collected by central government only. In that there is no doubt at all. Getting clarity, friends? अगर आप Google में गए, if you go to Google and type there who is collecting income tax,
you will find different answers. Some will tell center, some will tell state, some will tell local body. Different answers they'll write, because it is their feelings, it is their emotions. But the whole point is that we don't want any feelings and emotions. What we want is only sections and subsections. So please, no feelings and emotions, only sections and that's it. We are CA people. Correct, no? Everyone? Good. So tell me guys, what is Article 265? No tax shall be levied or collected except by authority of law. What is Article 246, 7th schedule? How many lists are given? What are 3 lists? Union list, state list, concurrent list. Union list contains those matters on which power is there with central government. State list contains those matters on which power is there with state government. Concurrent list, both central and state government. Now भी बोलो income tax कहाँ पे है? सेंटर मत बोलो, यूनियन लिस्ट, एंट्री नंबर 82. अब एक लाइन बोलूं क्या मैं? याद रख लो हमेशा. Entry number 82 of Union List of 7th Schedule to Article 246 has given power to central government to levy income tax. समझ में आ रहा है क्या? If I tell चल फुट, वो बोलेगा entry number 82 of Union List of 7th Schedule to Article 246 of Constitution of India. Then I will tell, okay sir, I will pay. समझ में आ रहा है क्या आपको? अब आप बोलो वो फ्लो में बोलो. एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ 7th schedule to Article 246 of Constitution of India has given power to central government to levy income tax. सबको क्लियर है? You might ask, सर बाकी टैक्सेस का क्या सीन है? बाकी टैक्स का क्या सीन है? मतलब अलग अलग एंट्री नंबर से. एंट्री नंबर 82 किसकी बात करता है? इनकम टैक्स की बात करता है. एंट्री नंबर 83 है, कस्टम्स की बात करता है. समझ में आ रहा ना बेटा? एवरीबॉडी, स्टेट लिस्ट में अपना अपना स्टेट का टैक्सेस है. प्रैक्टिकली द मेजर कॉन्सेप्ट इन स्टेट लिस्ट इज टैक्स ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. समझ गए ना बेटा? एवरीबॉडी, दैट पावर इज केप्ट विद स्टेट गवर्नमेंट ओनली. फ्रेंड्स, एवरीवन, ऑल ऑफ अस, आई होप वी आर गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट. एवरीबॉडी बोलो बेटा. दोस्त समझ में आया पक्का? 100%. अब बोलो कौन सा एंट्री नंबर बोलता है इनकम टैक्स के बारे में? 82. विच लिस्ट, विच शेड्यूल ऑफ विच आर्टिकल ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन पावर टू होम टू लेवी व्हाट इनकम टैक्स. सबको क्लियर है? तो आज के दिन अगर आप आज के दिन नहीं, सॉरी, आज के बाद कोई आपसे पूछेंगे कि इनकम टैक्स का पावर कहां से आया, आप तो ये नहीं बोलेंगे ना शिवा सर ने बोला इनकम टैक्स कलेक्ट करेंगे तो कलेक्ट करेंगे. भाई शिवा सर बोल रहा है मतलब कुछ तो लॉजिक से बोल रहा है ना भाई, ऐसे थोड़ी बोल रहे. सबको समझ में आई बात? पक्का क्लियर है? व्हाट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? प्रेस. फर्स्ट वन लेजिस्लेचर, लास्ट वन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. जुडिशरी क्या करता है? इंटरप्रेट द लॉस. लॉ बनाने वाले को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर. लॉ इंप्लीमेंट करने वाले को क्या बोलते हैं? पब्लिक फंड्स का सही इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है कौन चेक करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. बराबर है? सबको समझ में आ गया? एवरीबॉडी सर? चलो, नाउ मूविंग अहेड. वी अंडरस्टूड व्हाट इज टैक्स, व्हिच इज द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ये टैक्स से क्या करता है? डेवलपमेंट. जैसे एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, अब आप मत बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड ब्रिज मत बोलो. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर. और सबसे बड़ा खर्चा गवर्नमेंट का है डिफेंस. बहुत सही बात है यार. डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स, ये सबके लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? टैक्स. अभी आप बोल सकते इट इज आवर ड्यूटी टू पे इनकम टैक्स एंड वी आर बाउंड टू पे इनकम टैक्स because of entry number 82 of Union List of 7th Schedule to Article 246. I will tell okay sir. सबको समझ में आ रहा है ये चीज? सबको क्लियर है? Now, there are two types of taxes, my dear friends. बोलो, what are two types of taxes? Direct tax. So today being the first class, we are understanding the background of income tax. Income tax आया कहां से? But depth is there huge in our syllabus.
क्लियर है ना? बोलो, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. बोलो बेटा, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? जो डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे. वाह, शानदार. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? अरे ऐसा बोल रहा है सर, डायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा ऊपर की जेब से दे देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब चेक करके सब देंगे सर, ऐसा कुछ है क्या? बोलो फर्क क्या है बेटा? I'll tell technical words. ठीक है ना, मस्ती छोड़ देते. I'll tell technical words. Are we ready for it? Sir, there are two important words what we always understand, my dear friends. First word is impact. Second word is incidence. First word is what? Impact. Second word is incidence. दोनों में फर्क क्या है बेटा? सुन लो. Impact means who is liable to pay. बोला बेटा, इंपैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? हु इज लायबल टू पे. इंसिडेंस का मतलब होता है बेटा हु एक्चुअली पेस. बोलो बेटा, इंपैक्ट का मतलब क्या है? हु इज लायबल टू पे. इंसिडेंस का मतलब हु एक्चुअली पेस. नाउ फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस वेयर इंपैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन सेम पर्सन. समझ में आ रहा है सबको ये चीज? Direct taxes are those taxes where impact and incidence is on same person. Indirect taxes are those taxes where impact and incidence is on different person. I'll give an example so that we'll understand. Practical classic example for direct tax, what we are going to learn is nothing but income tax. Example, Shivateja is earning income. And on the income what I earned, I am paying tax from my own pocket. Correct, no friends? Can I collect my income tax from somebody and pay? Tell me guys. Or can I tell Vinod sir that थोड़ा income tax आप भी pay करो मेरा? हो सकता है कैसा? नहीं. अब ये indirect tax क्या होता है? Indirect tax is that tax where impact and incidence is on different person. Means a person who is liable to pay, person who actually pays, both are different in indirect tax. Classic example of indirect tax is GST. GST full form? Goods and? गलत आंसर है. It is goods and services tax. बोला केस तो है. हाँ भाई, एक लेटर में फर्क पड़ जाता है भाई. बराबर है ना बेटा? अगर अपना गर्लफ्रेंड का नाम है प्रिया, गलती से मैसेज कर दिए हाय रिया, हो गया ना खत्म कहानी आज के दिन. बराबर है ना बेटा? एक लेटर में क्या है? बहुत है. प्रिया को पी हटा के रिया लिख दिए, क्लास. अरे हंस क्यों रहे यार? मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, एग्जाम्पल है. स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं, सर आपका एक्सपीरियंस है क्या? नहीं भाई, एग्जाम्पल है. चलो, आर वी क्लियर विद दैट एवरीबॉडी? So now GST stands for goods and what, my dear friends? Services tax. Now let's take one small example, friends. Listen very clearly here. So when we go to restaurant, hotels, होटल में जब आप बिल देके, बिल में जीएसटी है क्या बेटा? बोलो बेटा. Now who is liable to pay the GST? No, it's not customer, it's not consumer. Who is liable to pay GST is the hotel owner. Hotel owner is liable to pay GST, but he collects from customer. Not because he wants to collect. That is because government only told that in indirect tax you shift the burden to the consumer. But you can't shift the burden in case of direct tax. समझ में आ रहा सबको ये चीज? अब आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके उसमें बताऊंगा मैं. आप जहां पे भी कोचिंग ले रहे हैं, जहां पे भी फीस पे कर रहे हैं, बताओ बेटा आपकी फीस रिसिट में जीएसटी है क्या? अरे नहीं है मतलब आप कुछ तो गड़बड़ है आपके साथ, है ना जीएसटी रिसिट में? अब आप मुझे बोलो, हु इज लायबल टू पे जीएसटी? हु? मी. अच्छा, ओके. Exactly. Academy owner is liable to pay GST. In our case, expert is liable to pay GST. Correct, friends? Now, can you tell expert, you are liable to pay GST? I will not give you GST. Go. That is not the point. No, why? Expert has got a right to shift the tax burden. To whom? Consumer. Because in GST, because in indirect taxes, my dear friends, ultimate burden will come on the consumer. अब आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कैसा सर, हमसे तो जीएसटी ले रहे हैं सर, हमको तो खर्चा बढ़ रहा है ना सर. बराबर है बेटा, बट अगर समझो मैं अगर होटल में गया तब मैं कंज्यूमर बन गया ना.
अगर मैं कोई पिक्चर देखने गया, वहां पे मैं कंज्यूमर बन गया ना, अल्टीमेटली बर्डन तो कंज्यूमर पे जाएगा ना बेटा, बोलो बेटा. Now can this shifting of burden be done in income tax? No, shifting of burden concept is only in what, my dear friends? Indirect taxes. Are we getting clarity on this point, everybody? सबको समझ में आया यहाँ तक? पक्का, my dear friends? Come on, what are the two types of taxes? Direct tax and indirect tax. Direct tax is that tax where impact and incidence is on same person. I don't want my students to tell the word direct tax is directly collected. नहीं बेरे भाई, मत करो यार ऐसा आंसर्स प्लीज. लेट्स बी प्रोफेशनल. बीकॉम वाले नहीं है अपन, आई मीन ड्यू रेस्पेक्ट, अपन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स है, तो अपने को आंसर ऐसे देना चाहिए. बराबर है ना बेटा? अपन कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा लग रहा है हमको, कि ऐसा फीलिंग आ रहा है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, बट नहीं है यार. वी आर प्रोफेशनल्स, we have to use proper language. Correct? Agree to that? Everybody? Bolo, what is direct tax now? Direct tax is a tax where impact and incidence is on same person. Impact का मतलब who is liable to pay. Incidence का मतलब who actually pays. In case of direct tax, both are same. Indirect tax, both are different. Example for indirect tax? GST. Because he who is liable to pay GST is the service provider, but they are collecting from consumer, customer. Sir, simple सी बात है. When you go to some shop, let us say to buy some water bottle, or let us say to purchase some medicines, इस पे लिखा हुआ रहता है ना MRP. ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? Inclusive of all taxes. तो burden अपने सर पे आ रहा है ना भाई. बोलो बेटा. Now when you say inclusive of all taxes, is it including income tax? अरे यार बोलो यार. No, indirect taxes are covered here because shifting of burden can be done only in case of indirect taxes, but not in case of direct tax. सबको क्लियर है यहाँ तक? Everybody, friends? So income tax is direct tax or indirect tax? Direct tax. But indirect tax is GST. That is a tax where impact and incidence is on different person. Are we getting clarity? Everyone, sir? Now, in India, my dear friends, in India, direct taxes are progressive in nature. I repeat again, in India, direct taxes are what in nature, beta? Progressive in nature. When I say progressive, the meaning is what, you know? Higher income, higher tax. Lower income, lower tax. So tax what I am paying, tax what Mukesh Ambani is paying, tax what a beggar is paying is not one and the same. तीनों का टैक्स अलग अलग है ना बेटा? Everybody, yes or no, friends? Because direct tax is the tax where it depends upon your income. Income ज्यादा है, tax ज्यादा है. Income कम है, tax कम है. बराबर है? But this indirect tax is not like that. This indirect tax is regressive in nature. When I say regressive in nature, it means whatever is your level of income, your tax remains same. For example, I'll give a small example. Let us say I go to a shop, okay, to buy one watch. To buy one watch. Shopkeeper told, sir, ये watch पे 18% GST है. ठीक है ना बेटा? अभी मुझे बताओ, अगर मुकेश अंबानी गए वही शॉप में यही वॉच लेने के लिए, उसको बोलेंगे क्या तेरे लिए 18% नहीं है, तेरे लिए 30% GST है? बोलो बोलो बोलो. क्यों? Because indirect tax. Indirect tax is what in nature? Regressive in nature. It doesn't matter what is your income level. Your tax remains same for everybody. Imagine one beggar goes and he wants to buy same watch. उसके लिए GST बोलेंगे क्या तेरे लिए आधा डिस्काउंट देंगे? अरे GST में कैसे डिस्काउंट देंगे यार? अरे समझ में आ रहा है आपको? सबको क्लियर है? So direct tax is what in nature? Progressive in nature. Indirect tax is what in nature? Regressive in nature. Progressive in nature मतलब क्या होता है? Higher the income, higher the tax. Lower the income, lower the tax. Regressive, tax remains same. Everybody clear with this? Chalo friends, tell me now. What are the 5 pillars of democracy? Bolo. Legislature, executive government, judiciary, press, comptroller and auditor general. Clear friends? Come on. What does Article 265 say? No tax shall be levied or collected except by authority of law.
Which entry number deals with income tax? 82. Of which schedule? To which article? Of what? Constitution of India. Has given how many lists basically? 3 lists. In that, in which list it is there? Union list. What is there in union list? Income tax. Correct, my dear friends? Income tax, direct tax or indirect tax? Direct tax. What is the meaning of direct tax? Direct tax is a tax where impact and incidence is on same person. Direct tax is the tax where impact and incidence is on same person. Indirect tax is a tax where impact and incidence is on different person. सबको clear है यहाँ तक? Everybody, sir? Next, I'll tell you one very important concept. Listen carefully, friends. आपको क्या लगता है इंडिया में टैक्स रेट क्या है? आपको क्या लगता है इंडिया में टैक्स रेट कितना है? मतलब कितना टैक्स पे करना है अपने को? अगर 100 रुपए कमाए तो कितना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को? मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैं वापस पूछ रहा हूं आपसे, अगर कोई आदमी 100 रुपए कमाता है तो उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना पड़ता है? कोई आइडिया? एग्जैक्टली द आंसर इज, वो डिपेंड करेगा इनकम कितना है. बिकॉज इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स इज व्हाट इन नेचर? प्रोग्रेसिव इन नेचर. गवर्नमेंट ने क्या किया? एक स्लैब बनाया. 2.5 लाख तक इतना टैक्स, 2.5 से 5 लाख तक इतना टैक्स, 5 से 10 लाख तक इतना टैक्स, 10 लाख के ऊपर इतना टैक्स. समझ में आ रहा है ना बेटा? मतलब हायर द इनकम, हायर द टैक्स. लोअर द इनकम, जीरो इनकम, जीरो टैक्स. समझ चलिए, ये बेस्ट है. और ये बेस्ट कैसा होता है यार? ऐसे थोड़ी होता है कि टैक्स के चक्कर में अपन इनकम ही नहीं कमाएंगे. ऐसा तो नहीं होता ना. फर्स्ट इज इनकम, देन इज इनकम टैक्स. Friends, everybody? No. To understand income tax law, my dear friends, there are basically 5 sources of income tax law. How many sources are there, beta? 5 sources of income tax law. First one is basically, my dear friends, listen, come on. First one is basically Income Tax Act 1961. Come on, friends. Income Tax Act, which year? That means this act was framed in 1961. अब बोलो बेटा, मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये है क्या कि 1961 से पहले टैक्स था ही नहीं? ऐसा कुछ है क्या? बोलो मुझे. इनकम टैक्स एक्ट विच ईयर? 1961. Does that mean that before 1961 there was no tax in India? बोलो बेटा. It was there. Absolutely. Sir, before 1961 Income Tax Act, there was Income Tax Act 1922. Before 1922, there was 1875. Long ago only income tax is there in India. And ये income tax जो concept है ना, अपना Indians का talent नहीं है. This is a talent of British. समझ में आ रहा है क्या आपको? आप लोग ये मूवी देखे क्या? लगान देखे क्या? What is the game they play? Cricket. Why they play? To avoid tax. लॉजिक कितना था मूवी में? वो मूवी का मतलब, मूवी में क्या है ये सब छोड़ दो, बट मूवी का फंडामेंटल प्रिंसिपल यही था, फंडा, कि बॉस अगर इंडियंस अगर गेम जीत गए तो आपको हम टैक्स नहीं लगाएंगे. बराबर है ना? वो टैक्स के चक्कर में वो गेम खेलते ना यार, उसी चक्कर में तो मूवी बनाए. अरे यार बोलो बेटा. So what is the point you have to understand here? This tax is not something new what India has created. This is there since ages. And there was a time where British used to collect 95% टैक्स. समझ रहे आप मेरी बात? ब्रिटिश यूज्ड टू कलेक्ट व्हाट परसेंट टैक्स? 95% टैक्स. मतलब अगर 100 रुपए कमाए, 95 रुपीज ब्रिटिश को पे करना पड़ता था, 5 रुपए अपने को मिलते थे. अब आप बिल्कुल नहीं बोल सकते उससे अच्छा तो कुछ कमाना ही नहीं. वैसा नहीं हो सकता ना. वी हैव टू लिव फॉर आवर, वी वांट आवर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, राइट? उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है यार. 95 रुपीज लेके जाते थे वो लोग. And of course, with a great effort, one fine day, 1947, we got freedom. But even after freedom, still taxes continued. But percentages have drastically come down. Today, the highest rate what we have is around 30%. Plus surcharge says something is there, that we'll talk. But 30% here it's. बराबर है ना? वो पे करने को अपने दुख हो रहा है अभी भी, वो अलग बात है. ये अलग बात है कि 30% पे करने को भी दुख होता है बहुत बार. बट सर एक बात बोलो क्या शिव तेजा, मैं जीएसटी भी पे करता हूँ, इनकम टैक्स भी पे करता हूँ.
कभी स्टूडेंट पूछता है सर आपको डबल टैक्स हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं दोनों भी पे करता हूँ, जीएसटी भी इनकम टैक्स भी। क्यों दोनों पे कर रहा हूं मैं? जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है। अरे बोलो यार, अरे एक तो 1 मिनट पहले वापस आ जाऊंगा मैं उधर। मुझे एक बात बोलो, पी एंड एल अकाउंट, टर्नओवर 60 लाख रुपए, प्रॉफिट 10 लाख रुपए, दोनों में फर्क है ना बेटा? इनकम टैक्स किस पे करोगे आप? हाँ, 10 पे या 60 पे? अम्मा बचा दिए। जीएसटी किस पे करेंगे? जीएसटी 60 पे लगता है बेटा। जीएसटी इज नॉट ऑन प्रॉफिट, जीएसटी इज ऑन टर्नओवर, जीएसटी इज ऑन टर्नओवर, बट इनकम टैक्स इज ऑन प्रॉफिट। और मैं दोनों भी पे करता हूं, पर आज तक जीएसटी पे करने में दुख नहीं हुआ मुझे। क्यों आप लोग बोलो? इनकम टैक्स पे करने में मुझे दुख होती है, पर जीएसटी पे करने के लिए मुझे आज तक कभी दुख नहीं हुआ। बस उतना ही बात है। जीएसटी, व्हाट विल आई डू? जीएसटी शिफ्ट द बर्डन टू होम? कंज्यूमर। अब आप मुझे बताओ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपर्ट कंज्यूमर है, बिकॉज आई एम गिविंग सर्विस टू एक्सपर्ट। अरे आई एम गिविंग सर्विस टू एक्सपर्ट ओनली, नो? एक्सपर्ट इज सर्विस रिसीवर, शिवतेजा इज सर्विस प्रोवाइडर। आपका एक्सपर्ट के उसमें रिलेशनशिप क्या है? एक्सपर्ट इज सर्विस प्रोवाइडर, यू आर सर्विस रिसीवर। समझ में आ रहा है क्या बेटा? मैं जीएसटी जो पे कर रहा हूं, जेब से कभी पे नहीं किया आज तक। ऑब्वियसली आई शिफ्ट द बर्डन, आई विल कलेक्ट फ्रॉम देम, पे टू गवर्नमेंट। मुझे कुछ आने का नहीं है, कुछ जाने का नहीं है, बट ये पे करने में, क्योंकि वो कहां से पे करना है? अपने खुद की जेब से पे करना है। कैन आई शिफ्ट द बर्डन टू समबडी? नो, बिकॉज इट इज व्हाट टैक्स? इनकम टैक्स, विच इज डायरेक्ट टैक्स। सबको क्लियर है ना? ये चीज समझ में आ गया ना? नो, गुड दैट आई गिव दिस एग्जांपल, बिकॉज एक दो चेहरे ऐसे दिख रहे थे, जीएसटी किस पे करेंगे? ठीक है, समझ में आ गया ना दोस्त? अभी जीएसटी किस पे भरेंगे? टर्नओवर पे भरेंगे। इनकम टैक्स किस पे भरेंगे? प्रॉफिट पे भरेंगे। इसका तो कोई डाउट नहीं है ना सबको? अभी डन। कमिंग बैक, सो व्हाट आर द 5 सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ? फर्स्ट वन बेटा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इफ समबडी इज आस्किंग यू 61 से पहले इनकम टैक्स था क्या? आंसर क्या है अपना? यस, इट वाज देयर, इट वाज देयर। बट आर वी गोइंग टू स्टडी ओल्ड लॉ? नो, वी आर गोइंग टू स्टडी इनकम टैक्स 1961। ये भी तो बहुत पुराना हो गया अभी, बट फिर भी वही है अभी। उसके बाद कुछ दूसरा एक्ट नहीं आया अभी तक। क्लियर है एवरीवन? इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकेंड वन, माय डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रूल्स 1962. Income Tax Act which year? 1961. Income Tax Rules which year? 1962. Act basically contains provisions what to do, what not to do. How to do, how not to do is given by rules. अरे मस्त बोला मैं अचानक। अरे समझ में आया क्या आपको? What to do, what not to do is given by Act. How to do, how not to do is given by rules. Act बोलते ये करो, ऐसा करना है। Rules बताएंगे ना? रूल्स स्कूल में बोलते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, वंडरफुल सर, क्लियर है? सो इनकम टैक्स एक्ट विच ईयर? 1961. सेकंड वन क्या है बेटा? इनकम टैक्स रूल्स 1962. थर्ड वन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल व्हाट बेटा? एनुअल फाइनेंस एक्ट। एक सेकेंड, डू यू नो हर? यस, हु इज शी? फाइनेंस मिनिस्टर। खुद स्टेट का बोलो, महाराष्ट्र का। शी इज नॉट अ स्टेट मिनिस्टर, शी इज ए सेंट्रल मिनिस्टर। शी इज बेसिकली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर मत बोलो दोस्त, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। व्हाट इज हर नेम? निर्मला। वंडरफुल। क्या काम है मैडम जी का? हाँ, लोगों को परेशान करना। हाँ, बजट। वंडरफुल। सी व्हाट इज इट शी इज कैरिंग? Budget. So basically, friends, what is budget? Tell me now.
बजट वर्ड सुने क्या आप? बजट का वर्ड सुने क्या आप लोग? बजट का मतलब क्या? क्या होता है बजट? एग्जैक्टली दो तरह का बजट होता है बेटा, एक तो फाइनेंस बजट, दूसरा होता है टैक्स रिलेटेड बजट। फाइनेंस बजट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग इधर जो भी आउट स्टेशन से आए, आप लोग सोचे होंगे कि हॉस्टल का इतना खर्चा होगा, खाने का इतना खर्चा होगा, क्लास का इतना खर्चा होगा, ये अपना बजट है, तो बीच में थोड़ा टाइम पास भी करेंगे, उसका इतना खर्चा है। बना है ना कुछ बजट? इधर कितने लोग बाहर से आउट ऑफ पुणे? मैं भी हूं, कोई चिंता नहीं, हम सब बजट बनाए, ठीक है बेटा, डन। तो बजट हम बनाते ना, फाइनेंस बजट। इन द सेम वे शी आल्सो डज टू थिंग्स, वन इज बजट ऑफ अलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, इंफ्रा पे इतना खर्च करना है, एजुकेशन पे इतना खर्च करना है, हेल्थ केयर पे इतना खर्च करना है, डिफेंस पे इतना खर्च करना है, ऑल दैट शी विल अलोकेट द बजट। दैट इज डन बाय Nirmala Sitharaman ji, finance minister, current finance minister, union finance minister. Second activity what they do is tax related proposals. Tax related proposals. Now what happens is, my dear friends, basically how is this finance act coming into picture? Every year budget is presented in the parliament. Which day? Wonderful answer. 1st of February. Superb, yeah, superb. Some of them have got good knowledge. 1st of February. Before it used to be last February, 2 साल पहले तक, but पिछले 2-3 साल से इन्होंने चेंज कर दिया 1st February. 1st February को क्या लेके आते हैं? बजट. Budget is pronounced in the parliament, in the open house. She will come and tell, हम ये सोच रहे कि ये साल टैक्स रेट को बढ़ाएंगे, सब बोलते हैं। किसको पसंद है? करेक्ट ना? देखे ना कभी? आप कभी देखे क्या टीवी पे कैसा होता है? हाँ, मतलब वो भूल जाते 2 मिनट के लिए, वो पॉलिटिकल लीडर से वो बस आ जाते बचपन में बस। चलो, बजट. दिस बजट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर. दिस बजट विल गो फॉर अप्रूवल फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा. सुने, लोकसभा राज्यसभा, फर्क क्या दोनों में? लोकसभा में कौन बैठते हैं? एमपीस. ओ, राज्यसभा में कौन बैठते? वो भी एमपी है मेरे भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे? बराबर है बेटा, सही आंसर है. लोकसभा में जो बैठते हैं उनको हमने इलेक्ट किया है, वी वोटेड फॉर देम, बट राज्यसभा मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड, दे आर नॉमिनेटेड. सर समझ में आ रहा है क्या? लोकसभा मेंबर्स आर व्हाट? इलेक्टेड. राज्यसभा मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है. समझ में आ रहा है बेटा? एंड दिस बजट विल गो फॉर अप्रूवल फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा. नाउ once approved, once what beta? Approved. Once approved, budget becomes finance bill. Once approved, budget becomes what, my dear friends? Finance bill. I repeat once again, once it is approved, budget becomes what, my dear friends? Finance bill. And this finance bill will then go for signing by Modi ji, president. Who is the present president of India? Thank you. Modi ji तो नहीं है ना? Thank you so much. So it is signed by president. Sir, India में president का सबसे बड़ा काम यही है. सही, actually, lot of countries there is a lot of importance given to president, but in India, in a democratic country like India, we give more importance to the prime minister. But the fact to be noted is that कोई भी अगर बिल पास होना है, कोई भी अप्रूवल फाइनली करना है, वो फाइनली करेंगे प्रेसिडेंट. Once it is signed by president, my dear friends, finance bill will become finance act. What was the first one, my dear friends? Budget. Budget is approved by Lok Sabha and Rajya Sabha. I repeat once again, budget is approved by Lok Sabha and Rajya Sabha. Once it is approved by Lok Sabha and Rajya Sabha, budget becomes finance bill. Then the finance bill is signed by president. Then finance bill will become finance act. सबको क्लियर है ये चीज? Everybody, yes or no, my dear friends? First one क्या present करेंगे? Budget. Who will present? Madam मत बोलो. Who will present? Union Finance Minister. Come on, friends. Who will present the budget? Union Finance Minister. And the budget will go for approval from Lok Sabha and Rajya Sabha. Once approved, budget becomes
finance bill, then the bill is signed by president, then finance bill will become finance act. सबको यहां तक clear है? Now I'll tell one line, yes or no you tell. Practical point है ये. Whatever is there in budget may not be there in finance bill. Whatever is there in finance bill may not be there in finance act. सही है क्या? समझे क्या मैं क्या बोला? Whatever is there in budget may not be there in finance bill. Whatever is there in finance bill may not be there in finance act. Do you agree to this? सब प्रैक्टिकली ये बहुत बार होता है. अगर बजट में 100 पॉइंट है, फाइनेंस बिल में सिर्फ 80-90 पॉइंट होते हैं, 10 पॉइंट उड़ जाते. द रीजन बिकॉज मेंबर्स हैव नॉट अप्रूव्ड. आप लोग कभी पार्लियामेंट में कभी कोई बिल पास हो तो देखे होंगे, वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, आइस नो करके, मतलब कितने लोग यस बोल रहे हैं उसके लिए, कितने लोग नो बोल रहे हैं उसके लिए, उसके हिसाब से वो लोग रिकॉर्ड करते, मेजॉरिटी वोटिंग. सो इफ सम पॉइंट इज देयर इन द बजट, इफ द लोकसभा मेंबर्स, राज्य मेंबर्स आर टेलिंग वी डोंट वांट दैट पॉइंट, तो क्या होगा? फिर उड़ गया बजट से, फिर फाइनेंस में वो पॉइंट रहेगा ही नहीं. लास्ट केस प्रैक्टिकली ज्यादा होता नहीं है. अगर प्रेसिडेंट को लगा कि फाइनेंस बिल में ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं रहना चाहिए, तो वो भी उड़ा सकता है, पर प्रैक्टिकली होता नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट विल नॉट रिमूव एनीथिंग. वो भाई साहब थोड़ा अच्छे दिल का आदमी है, साइन करके दे देते. सर समझ में आया बेटा सबको? एवरीबॉडी सर, डिड वी अंडरस्टैंड हाउ विल फाइनेंस एक्ट कम इनटू पिक्चर? नाउ दिस इज हाउ एवरी ईयर finance act comes into India every year. Now first source of, when I learnt about sources of income tax law, what was the first source of income tax law? Income Tax Act 1961. Now that Income Tax Act 1961 is amended every year. Is what, sir? Amended every year by Finance Act. समझ में आ रहा है क्या बेटा? बोलो everybody sir. Now listen to our important points. Listen very clearly. Friends, आपका एग्जाम कब है? मई 2024, बराबर है? अभी फाइनेंस एक्ट 24 आएगा फरवरी में, आएगा ना फरवरी में? मतलब फरवरी में बजट आएगा, मार्च के आसपास वो बिल बन जाएगा, मार्च एंडिंग या अप्रैल में वो एक्ट बनेगा. मतलब कैसा बनेगा समझ गए ना आप? लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा. आपको ये फाइनेंस एक्ट 24 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है. समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? व्हाट इज एप्लीकेबल फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स इज दैट जिस साल में आप एग्जाम लिखेंगे, सिंपल आंसर बोल रहा हूं आपको मैं, जिस साल में आप एग्जाम लिखेंगे उस साल का फाइनेंस एक्ट आपको एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा. समझे मैं क्या बोल रहा हूं? I'll repeat once again what I told. What I told is that in which year you write exam, that year Finance Act will not apply for your exam. When writing exam in May 24, for that Finance Act applicable is Finance Act 2023. November 24 also syllabus is same. इसलिए हम लोग टैक्स में हमेशा ये बोलते हैं मई और नवंबर के लिए सिलेबस सेम है, नवंबर मई के लिए सिलेबस अलग है. समझ रहे आप में क्यों हो रहा है ऐसा? मैं लास्ट बैच जो खत्म किया था अभी रिसेंटली, फरवरी में फरवरी बैच चालू हुआ था, जो नवंबर एग्जाम के लिए था वो बैच, उस बैच में मैंने इनको जो पढ़ाया और आपको जो पढ़ाऊंगा बहुत फर्क रहेगा. बट आपको जो पढ़ाऊंगा, अगले बैच में जो पढ़ाऊंगा वो दोनों सेम रहेगा. क्यों? मई और नवंबर के लिए सिलेबस सेम है. बेटा समझ रहे ना आप मेरी बात? एवरीबॉडी, सो फॉर योर एग्जाम विच फाइनेंस एक्ट इज एप्लीकेबल? 2023. अगर कोई बोले आपको दोस्त अगर शाम में मिल गए कहीं बाहर, वो बोल रहा है नेक्स्ट ईयर बजट आएगा, आपने को वो भी पढ़ना पड़ेगा, उसको एक चुप कंट्रोल उसको बिठा के समझा मेरे भाई, 24 बजट एप्लीकेबल नहीं है अपने लिए, 23 बजट एप्लीकेबल है. मैं लास्ट टाइम सच्ची बोल रहा हूं, मैं लास्ट टाइम क्लास में उनको क्लियरली बताया था कि 23 एप्लीकेबल एग्जाम के लिए आपको. ऐसा ऐसा होता है, स्टूडेंट अगले दिन आके बोलता है मुझे सर हमारा दोस्त ऐसा बोला है कि उनको वहां पे बताया कि अगले साल जो आएगा नया वो भी पढ़ना पड़ेगा. भाई प्लीज डोंट जस्ट गेट इनटू एनी माइंडसेट दैट समथिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अस, वो एप्लीकेबल अपने लिए. इसे तमाशा बनाने के लिए मत बनो. समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है एवरीबॉडी? सो फाइनेंस एक्ट 24 आपको एप्लीकेबल है क्या? नहीं. फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है आपको? 23, जो ऑलरेडी आ चुका है, जो ऑलरेडी बन चुका है, वो पढ़ाएंगे आपको आराम से यार.
ऐसा थोड़ी है कि जो आगे आएगा वो पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी आ चुका है वही पढ़ेंगे हम. Are we clear with this, everyone? All of us? Coming back to discussion. What are the 5 sources of income tax law? First one, Income Tax Act 1961. Next, Income Tax Rules 1962. Next one, Annual Finance Act. Fourth one, my dear friends, circulars and notifications. Circulars and notification. Sir, circular is something like a clarification. सुनिए ना, स्कूल में सर्कुलर आते थे. स्कूल में अब क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहे थे, अचानक कोई बंदा आता है, डोर ओपन करता है, ऐसा कुछ पेपर देता है, हम सब चिल्लाते छुट्टी 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 करके. हुआ है ना स्कूल में ऐसा? हाँ, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर. क्लियर? And in income tax, my dear friends, these circulars and notifications are given by one body or authority known as CBDT, which stands for a Central Board of Direct Taxes. CBDT का full form क्या है बेटा? Central Board of Direct Taxes. Central Board of Direct Taxes is that authority which is formed by Ministry of Finance. By Ministry of Finance, under Department of Revenue, there is Central Board of Direct Taxes. Government gave them power. Government gave them power to issue what? Circulars and notifications. सबको समझ में आ रहा है? Everybody, sir? So what are the 5 sources of income tax law? First one, beta, Income Tax Act 1961. Next, Income Tax Rules 1962. Annual Finance Act. So name only says Annual Finance Act. इसका मतलब क्या है? हर साल आएगा. Annual Finance Act. Next one, Circulars and Notification. Last one is, my dear friends, is nothing but judicial pronouncements. What is the word, sir? Let me write it properly. Judicial pronouncements. Judicial pronouncement. Pronouncement means basically rulings of High Court or what है बेटा? High Court or Supreme Court. समझ में आ रहा है बेटा? Simple example is that अगर कोई पॉइंट है, आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और है, मेरा इंटरप्रिटेशन कुछ और है, अपन किधर जाएंगे इंटरप्रिटेशन कंफर्मेशन करने के लिए? कोर्ट. ऑलरेडी पढ़े ना अपन, जुडिशियरी इंटरप्रेट द लॉस. कोर्ट के पास जाएंगे. महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कुछ इंटरप्रेट किया उसको, बट कर्नाटका हाई कोर्ट इंटरप्रेटेड इन ए डिफरेंट वे. नाउ व्हाट इज एप्लीकेबल? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोला? कोई कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आपका इंटरप्रिटेशन अलग है, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है. हम दोनों ने महाराष्ट्र हाई कोर्ट के पास गए, उन्होंने कुछ इंटरप्रिटेशन दिया. वैसे सेम कहानी कर्नाटका में भी हुआ है, बट कर्नाटका हाई कोर्ट हैव गिवन ए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देन व्हाट महाराष्ट्र हाई कोर्ट हैज गिवन. महाराष्ट्र हाई कोर्ट का एक इंटरप्रिटेशन है, कर्नाटका हाई कोर्ट का एक इंटरप्रिटेशन है. अपन बैठे तमिलनाडु में, अपने को क्या फॉलो करना है? सुप्रीम कोर्ट से ज्ञान है इश्यू अभी तक. What they told in the law is that any ruling of High Court is applicable only in that particular state. महाराष्ट्र हाई कोर्ट जो रूलिंग देता है महाराष्ट्र में वही एप्लीकेबल है. महाराष्ट्र का कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि भाई कर्नाटक हाई कोर्ट बोले टैक्सेबल नहीं है, मैं वो फॉलो करूंगा. नहीं, महाराष्ट्र वाले बोलते हैं ऑलरेडी टैक्सेबल, चुपचाप फॉलो करो. बट इफ सुप्रीम कोर्ट सेज समथिंग, all states, all courts are bound to follow whatever Supreme Court says. Because Supreme Court is also known as Apex Court of India. सुने ये word Apex Court of India, highest judiciary body. Whatever Supreme Court says, that is full and final. उस पर कोई डिस्कशन नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं. एंड मैं जो आपको एग्जाम्पल बोल रहा था 2 मिनट पहले कि कर्नाटक हाईकोर्ट एक पॉइंट बोले और महाराष्ट्र हाईकोर्ट एक पॉइंट बोले, अपन बैठे तमिलनाडु में, तो अपन क्या करते? तमिलनाडु हाईकोर्ट तो कुछ बोले नहीं, तो अपने को जो फेवरेबल है अपन वो फॉलो करेंगे. समझ में आ रहा है ना बेटा? एवरीबडी, बिकॉज अपनी हाईकोर्ट तो कुछ बोले नहीं ना. फ्रेंड्स, सबको क्लियर है ये पॉइंट? चलो बेटा, व्हाट आर द 5 सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स. क्लियर everybody, friends? How many pillars are there for democracy?
How many sources are there for income tax law? 5. Wonderful. What are the 5 sources of income tax law? Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962, Annual Finance Act, Circulars and Notification. Last वाला point, Judicial Pronouncements. सबको clear है ये तक? Everybody, can we write some points? So please pick up your book, we'll write some points. अगर आज नया बुक आप लेके नहीं आए तो दूसरे बुक में लिखो, बाद में कॉपी कर लेना. आज ज्यादा लिखेंगे ना वैसे तो टेंशन नहीं, पर ऑलरेडी आप नया बुक लेके आए तो नया बुक में स्टार्ट करो, नहीं लेके आए तो कहीं और लिखो, बाद में कॉपी कर लेना. ठीक है, shall we start? Everyone, चलो राइट. फर्स्ट पॉइंट, there are 5 pillars of democracy. सर जब भी पॉइंट्स लिखते हो तो आप 1 2 3 4 ऐसा मत करो, यूज बुलेट पॉइंट्स. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल बुलेट पॉइंट मतलब ऐसा बुलेट पॉइंट्स लिखते जाओ. आप 1 2 3 4 लिखेंगे तो फिर 500 600 पॉइंट हो जाएंगे, फिर आप टेंशन में आ जाएंगे अननेसेसरली. क्लियर है ना बेटा? चलो क्या लिखे आप फर्स्ट? 5 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. फर्स्ट क्या है बेटा? लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर, put a hyphen, hyphen dash, hyphen dash. क्या लिखेंगे? frames the laws. Legislature frames the laws. Laws LOSS मत लिखो मेरे भाई, LAWS है वो. सेकंड, executive government. सेकंड, executive government. put a hyphen and write. क्या लिखेंगे बेटा? implements the laws. Legislature frames the laws. Executive government implements the laws. Third one beta, judiciary. Judiciary, put a hyphen and write, interprets the laws. Interprets the laws. Next one, press, echoes public opinion. लास्ट वाला स्पेलिंग बराबर लिखना बेटा. क्या है वो? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. put a hyphen and write, what my dear friends? Watchdog for public funds. Clear? Next point. As per Article 265, as per Article, what my dear friends? 265 of the Constitution. As per Article 265 of the Constitution. Now write in quotations. Quotations you write. No tax shall be. No tax shall be. No tax shall be levied or collected. No tax shall be levied or collected except by the. No tax shall be levied or collected except by the authority of law. No tax shall be levied or collected except by the authority of law. दोस्तों क्लियर है सबको? एवरीबॉडी बेटा वापस रिपीट करो सेंटेंस. नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. मैं आपको ये तो नहीं लिखाऊंगा कि लेवी मतलब इंपोज, कलेक्ट मतलब टेकिंग, नहीं जरूरत नहीं है ना. हाँ प्लीज. नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट. इन 7th schedule, in 7th schedule to
7 schedule 2, TO 2, article 7 schedule 2 article, what beta? 246. 3 list, 3 LISTS list are given for the purpose of levy of taxes. For the purpose of levy of taxes. Okay? नीचे लिखो first point. Union list. Union list, put a hyphen and write. Central government. Central government has exclusive powers. Central government has exclusive power to make laws. To make laws on the matters contained in. To make laws on the matters contained in. To make laws on the matters contained in union list. बराबर है बेटा? On the matters contained in union list. We will not stop there. We will write example. बोलो बेटा example. Income tax और दूसरा कुछ तो बोलो. बोला था मैं कुछ. Customs duty. Income tax, comma, customs duty, etc. Income tax, customs duty. ठीक है? Next second point. Second point क्या है बेटा? State list. Put a hyphen and write. It contains those matters. It contains those matters on which power is there. It contains those matters on which power is there exclusively with. It contains those matters on which power is there exclusively with. Whom, sir? State government. Clear है बेटा? Next, last point. बोलो बेटा क्या है last point? Concurrent list. Concurrent list. Put hyphen and write. It contains those matters on which power is there with. On which power is there with center and state together. सबको क्लियर है बेटा? And in India, I hope you know that in GST, that model is called dual GST model. कभी आप बिल देखे तो देखे होंगे ना, CGST, SGST, Central GST, State GST. ठीक है, anyways, we'll not get into it because अपना काम पहले इनकम टैक्स का है. ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक बेटा? Everybody, sir? Now next point, very very important point. Put a star mark and write entry number 82. Correct? No? Entry number 82 of union list of 7th schedule. Entry number 82 of union list of 7th schedule to article 246. Entry number 82 of union list of 7th schedule to article 246 has given power to article 246 has given power
to central government has given power to central government to levy what, friends? Income tax. To levy income tax. समझ में आ गया सबको? इधर वो हाईलाइट करो ना प्लीज, एंट्री नंबर 82 को अंडरलाइन कर दो, इंपॉर्टेंट है. And sir, let me honestly tell you that in all subjects, when you have got MCQ 30% no, MCQ 30% being there is one way positive that there is no negative marking. अपने पास 4 ऑप्शन तो है देखने के लिए, बट वन वे इट इज वेरी डेंजरस बिकॉज चारों ऑप्शन ऐसा दिखते हैं कि चारों भी सही आंसर से. 4 आंसर्स ऑप्शंस व्हाट यू हैव गॉट, ऑल 4 लुक्स एज इफ एवरीथिंग इज करेक्ट. कौन सा चूज करना है वो बड़ा चैलेंज है. एंड एमसीक्यू वजह से ना आईसीए के पास आपको ट्विस्ट करने के लिए बहुत ऑप्शन है उनके पास. अभी हर छोटे छोटे पॉइंट एमसीक्यू बन सकता है, बराबर है ना? तो कितना इंपॉर्टेंट है कि हर छोटी से छोटी पॉइंट पे कितना ध्यान रखें, because 1 mark will make a whole difference. I've got so many examples where people have got 149 also, and I've got so many examples who got exact 150. They feel like rankers. अरे बराबर है ना बेटा? अरे 150 डॉट आना मजाक नहीं है. 151 अलग है, 150 अलग है. अरे यार मुझे बताओ, जो खुशी 150 वालों को रहता है, जो खुशी 151 वालों को रहता है, सेम रहता है क्या? अपने को 600 मार्क्स से 300 लाना है. कोई दोस्त को 320 आया, बोलेगा अरे 320 आ गया रे, मैं पास हो गया. जिसको डॉट 300 आया वो रैंकर से भी ज्यादा खुश रहेगा वो, बराबर है ना भाई? क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर खत्म. इसमें से कितने को फाउंडेशन में एग्जैक्ट डॉट मार्क्स है? कोई है? हाँ, रैंकर से भाई आप लोग. तो उसका खुशी का आई एम श्योर यू नो द फ्लेवर ऑफ टेस्ट ऑफ दैट डॉट. गुड, वेरी गुड, नाइस. इसमें कितने लोग फाउंडेशन रूट से आए? हमने फ्रॉम फाउंडेशन? Oh, majority. Only few are from direct entry. ठीक है, no problem. सर डायरेक्ट एंट्री और फाउंडेशन हो कुछ फर्क नहीं है. आई जस्ट कैजुअली आस्क्ड. वो डायरेक्ट एंट्री वाले ऐसा देख रहे हैं मुझे, हमको क्या सेम ही तो सिलेबस है दोस्त, कुछ फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है. यू एवरीथिंग इज सेम फॉर बोथ ऑफ यू, नो डिफरेंस एट ऑल. डोंट वरी. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. There are 2 types of taxes, that is direct tax and what beta? Indirect tax. Next line, very important. Direct tax is a tax where direct tax is a tax where direct tax is a tax where what beta? Impact and incidence. Direct tax is a tax where impact and incidence is on same person. Whereas indirect tax is a tax where indirect tax is a tax where impact and incidence is on different person. Clear? Write one note. There is a concept of shifting of tax burden. There is a concept of shifting of tax burden. There is a concept of shifting of tax burden.
only in case of, बोलो बेटा, indirect taxes. There is a concept of shifting of tax burden only in case of indirect taxes. Example, GST. There is a concept of shifting of tax burden only in case of indirect taxes, that is GST. Clear? Next point. Direct taxes are progressive in nature. Direct taxes are what, beta? Progressive in nature. Whereas indirect taxes are what, beta? Regressive in nature. इसका मतलब पता है ना अपने को? प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है बेटा? Higher the income, higher the tax. Lower the income, lower the tax. Regressive का मतलब tax remains same irrespective of type of person. Clear है? Next point, last point. There are 5 sources. There are 5 sources of income tax law. There are 5 sources of income tax law. Number one, Income Tax Act. Income Tax Act 1961. Income Tax 1961. Number 2, Income Tax Rules. Which year, beta? 1962. Income Tax Act 1961. Income Tax Rules 1962. Third one, beta? Annual Finance Act. Which year? Every year. अपने एग्जाम के लिए कौन सा एप्लीकेबल है? 2023. ये तो क्लियर है ना पक्का? प्लीज. एनुअल फाइनेंस एक्ट. ठीक है, उसको ब्रैकेट में लिखो बेटा, ब्रैकेट में लिखो बजट becomes finance bill. Budget becomes finance bill when it is approved by when it is what, beta? Approved by Lok Sabha and Rajya Sabha. Full stop, continue. Full stop and continue. Such finance bill will become Finance Act. Such finance bill will become Finance Act after the signing मत लिखो बेटा, after the assent of the president. ASSENT. Assent. Good, very good. After the assent of the president. Assent is like approval. Don't write the word signing. Assent. Assent of the president. That's it. Bracket close. चलो कितने पॉइंट्स हो गए अभी? इनकम टैक्स एक्ट हो गया, इनकम टैक्स रूल्स हो गया, एनुअल फाइनेंस एक्ट. नेक्स्ट क्या है बेटा? Circulars and notifications. Bracket given by कौन बेटा? CBDT. That is कैसा लिखेंगे? that is कैसा लिखते हैं आप लोग? I.E. पता है ना? I.E. that is Central Board of Direct Taxes. Central Board of Direct Taxes.
ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट, लास्ट पॉइंट लिखो, क्या है वो? जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, प्रोनाउंसमेंट्स बेटा, प्रोनाउंसमेंट्स, प्रोनाउंसमेंट्स, स्पेलिंग बोलू क्या, समझ गए ना? प्रोनाउंसमेंट्स, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, ब्रैकेट में लिखो, उसका मतलब क्या है ब्रैकेट में लिखो, रूलिंग्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, रूलिंग्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? नाउ लिसन, next 5 minutes nothing to write, just listen whatever I'm telling, just listen my dear friends, सुन लो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, चुपचाप सुन लो क्या है। सर, in our income tax syllabus of paper 3A, my dear friends, they have very smartly prepared the syllabus. What they have done is, in your syllabus you have got one chapter called basic concepts first, that is what we are trying to learn, करेक्ट? दैट विल टेक सम 2-3 days टाइम, एक दिन में होने वाला काम नहीं है वो, लगेगा 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना बेटा एवरीबॉडी? उसके बाद बेटा वी हैव गॉट वन चैप्टर कॉल्ड रेसिडेंशियल स्टेटस, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? रेसिडेंशियल स्टेटस। इनकम टैक्स में इंडिया में कितना दिन कोई आदमी है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट है तो उसका टैक्स अलग है, अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसका टैक्स अलग है। नाउ हाउ डू यू क्लासिफाई ए पर्सन एज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, यू विल लर्न इन सेकंड चैप्टर। तो आपको सिलेबस में क्या है वो बता रहा हूं आपको मैं, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं आपको? बोलो बेटा, सिलेबस सेकंड चैप्टर का नाम क्या है बेटा? रेसिडेंशियल स्टेटस। इससे क्या पता चलेगा अपने को वो बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। उसमें एक अलग क्लासिफिकेशन है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, पूरा कहानी बाद में पढ़ेंगे अपन। अगर रेसिडेंट है तो टैक्स कैसा आएगा, नॉन रेसिडेंट है तो टैक्स कैसा आएगा, बट वो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कब बनेगा वो ये चैप्टर में पढ़ेंगे हम। सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद बेटा अंडर इनकम टैक्स माय डियर फ्रेंड्स, सर आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, थिंक प्रॉपर्ली एंड टेल। कोई भी बंदा अगर पैसे कमा रहा है, सोर्स क्या क्या हो सकता है बोलो आप, आपको क्या लगता है कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं? ठीक है, कोई बंदा बोल रहा है सैलरी आ सकता है, हाँ कोई बिजनेस कर सकता है, रेंट आ सकता है किसी को, इंटरेस्ट भी आ सकता है किसी को, बराबर है भाई, कमीशन भी आ सकता है, वाव, धन 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 आंसर है, धड़ 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 बोलो। और कैसे पैसे आ सकते हैं? शेयर मार्केट का ट्रेडिंग करे कोई, क्या बात है, गुड। नेक्स्ट, ब्रोकरेज कमीशन लिखे ना यार, अरे सिनोनिम्स मत बोलो यार। नेक्स्ट, डिविडेंड, गोल्ड से पैसा कैसे आता है भाई? वो तो इन्वेस्ट करे, इनकम कब आ रहा? मैं इनकम की बात कर रहा हूं, गोल्ड बेचे जब आएगा, ठीक है यार। सेल ऑफ गोल्ड, कुछ। नेक्स्ट, और कैसे इनकम आ सकता है? अरे कितना क्या सोच रहे यार, इनकम और कैसे आ सकता है? हाँ, प्रोफेशन, सबसे पहले अपने आप को भूल गए लोग, क्या यार आप लोग, मुझे सबसे पहले आप यही बोलेंगे प्रोफेशन सीए। नेक्स्ट, सब्सिडी, ओ स्मार्ट आदमी है, ठीक है। और कैपिटल गेन्स, ठीक है। फ्रेंड्स, these are the various source of income like salary, business, rent, commission, dividend। अलग अलग तरीके का आदमी इनकम आ सकता है बेटा। बेटा बोलो ना बेटा। इंडिया में क्या किए, अंडर इनकम टैक्स दे क्लासिफाइड इनकम इनटू 5 heads of income। How many income heads they classified? 5 heads of income। The 5 heads of income are income under salaries, income from house property. The third one name is PGBP, which stands for profits and gains from business or profession। नाम क्या है इसका? Profits and gains from business or profession। चलो बेटा, पहला नाम, पहला क्या है? सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा profits and gains from business or profession। The fourth type of income they told is
capital gains. Capital gains is what we get on sale of an asset. शेयर मार्केट में शेयर्स बेच दिए, या तो कुछ प्रॉपर्टी था पुराना 10 साल पहले परचेस किए, बेच दिए, प्रॉफिट आएगा ना. शेयर पर लॉस आए तो ठीक है, लॉस भी आ सकता है, ऐसा कुछ क्या है, प्रॉफिट ही आएगा. लॉस भी तो आ सकते हैं. अगर समझो अपने को लॉस आया बट दूसरे में प्रॉफिट आया तो क्या करेंगे? समझे क्या मैं क्या पूछा? सर एक शेयर बेच दिया सर, 1 लाख रुपए लॉस आया, दूसरा शेयर बेच दिए, 3 लाख का प्रॉफिट आया. अब ऐसा बोलेंगे कि 3 लाख पे टैक्स भरो, 1 लाख जो लॉस आया भूल जाओ. बोलो बेटा, इनकम टैक्स बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तेरे को जो लॉस आया ना वो इनकम के साथ सेट ऑफ कर दे. क्या कर दे? और बाकी इनकम पे टैक्स पे कर. समझ में आ रहा है? चलो, व्हाट इज द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम? सैलरीज. नेक्स्ट वन, हाउस प्रॉपर्टी. थर्ड वन, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. फोर्थ वन, कैपिटल गेन्स. फिफ्थ वन इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम, नेम ओनली सेज अदर सोर्सेस. तो क्या आ सकता है इसमें बोलो? लास्ट वाले में क्या आ सकता है? ज्यादा सोचो मत, जो पहले 4 में नहीं आता वो लास्ट में आएगा. जैसे डिविडेंड, कमीशन, रेंट. कैसा आएगा? रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा ना बेटा. बट एक छोटी सी पॉइंट बोलूंगा आपको, अगर घर रेंट पे दिए तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, गाड़ी रेंट पे दिए तो अदर सोर्स में आ सकते हैं. गाड़ी रेंट पे देना अपना धंधा है तो बिजनेस में आएगा. अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बोलो यार, सिंपल सी बात है यार. शिवा तेजा के पास एक गोल्ड चेन है, मैंने अगर गोल्ड चेन बेच दिया, इनकम कहां पे दिखाएंगे आप? कैपिटल गेन्स. सुपर. ज्वेलरी शॉप वाला गोल्ड चेन बेच दिया, पीजीबीपी में जाएगा. अरे चीज तो वही है, प्रोडक्ट इज सेम, बट इनकम विल क्लास चेंज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पर्सन. समझ में आ रहा है क्या बेटा? एवरीबॉडी सर, ऑल ऑफ अस. सर मैं क्लासेस ले रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, मेरा इनकम जाएगा पीजीबीपी में. अगर कोई बंदा है पूरा साल नौकरी कर रहा है, पूरा साल में 2 दिन जाके क्लास पढ़ा के आ रहा है, उसको टीचिंग इनकम आ रहा है थोड़ा सा, साल का 10,000 रुपए, कहां दिखाएगा वो? अदर सोर्स में दिखाएगा, बिजनेस में थोड़ी दिखाएगा, रेगुलरली थोड़ी कर रहा है एक्टिविटी. अरे समझ में आ रहा है क्या बेटा? सो व्हाट आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम माय डियर फ्रेंड्स? सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. क्लियर है बेटा? एवरीबॉडी? ऑनलाइन कोई स्टूडेंट पूछ रहा है क्या ये सर नोट शेयर कर दो? करेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, करेंगे. नेक्स्ट, प्रोफेशनल फीस. पीजीबीपी, इट इज कवर्ड इन पीजीबीपी माय डियर फ्रेंड. कम ऑन. सो व्हाट आर 5 हेड्स ऑफ इनकम? सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस. ये सारे चैप्टर्स अपने सिलेबस में है. मतलब अगर कोई बंदे को सैलरी आया, उसका इनकम कैसा कंप्यूट करेंगे वो हम सैलरी में पढ़ेंगे. अगर कोई बंदे को रेंटल इनकम आया, इनकम किधर जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी. उसका कंप्यूटेशन कैसा करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे. कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, उसका कंप्यूटेशन कैसा करेंगे? वो पीजी में पढ़ेंगे. कोई बंदे को कोई प्रॉपर्टी बेच दिया, उसको कैपिटल गेन आया, वो कहां पे पढ़ेंगे? इधर पढ़ेंगे. कोई बंदा बोले मेरे को कुछ भी इनकम नहीं है, मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं, रोज सुबह जाऊंगा और बेटिंग करके आऊंगा. बेटिंग, लॉटरी, अदर सोर्सेस. समझ में आ रहा है बेटा? In every head of income, you will understand how will you do computation of income. ये सब अपना सिलेबस में है, और अच्छी बात है अपने सिलेबस में ये सब है. अभी सीखना तो पड़ेगा ना यार. अरे यार अपनी वैल्यूएशन क्यों है? आप इतना, मैं स्टार्टिंग में क्या बोला था आपको, मैं क्लास स्टार्टिंग में मैं आपको पॉइंट बोला था, दैट इज पीपल कम टू सी ओनली फॉर 2 रीजंस. नंबर 1, बिकॉज देयर इज गुड मनी मेकिंग इन्वॉल्वड आफ्टर वी बिकम अ सीए विद गुड नॉलेज. नॉलेज नहीं ऐसे ही पास हो गए तो कुछ काम का नहीं है, बिकॉज यू शुड हैव नॉलेज एंड यू हैव टू क्वालिफाई. क्वालिफिकेशन, नॉलेज, बोथ आर इंपॉर्टेंट. ओनली क्वालिफिकेशन कचरा है, ओनली नॉलेज डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट मतलब अच्छा जॉब लाना, दोनों है भाई साहब, यू आर द किंग. बराबर है ना बेटा? अभी पॉइंट क्या है? सी, सेकंड पॉइंट इज व्हाट? रेस्पेक्ट. व्हाई इज दैट रेस्पेक्ट कमिंग? बिकॉज ऑफ नॉलेज व्हाट वी आर कैरिंग. डॉक्टर को हम रेस्पेक्ट क्यों करते? बोलो आप जब भी हॉस्पिटल जाते हैं कुछ कारण से, आई मीन by mistake when we go to hospital sometime, what will you do? The moment we go to doctor, we'll tell what, sir please help us, please take care of us. ऐसा क्यों बोलते इतना? ऐसा बोलते क्या है कर ट्रीटमेंट? ऐसा जिंदगी में कभी बोलते क्या कोई? नहीं. उतना रेस्पेक्ट से, प्यार से क्यों बात कर रहे हैं उनसे? प्यार है क्या वो? ओवरफ्लोइंग ऑफ लव? नहीं. क्यों?
अरे डॉक्टर है भाई, जरूरत है अपनी, वो है तो अपन है. He is like replica to God for us because he is helping us, saving our life. In the same way, we are also doctors only, but we are not health doctors. We are financial doctors. We will see the health of P&L and balance sheet. P&L balance sheet का तबे कैसे अपन ही देखते. फीवर आया तो अपन सेट कर दे उसको. अरे बोलो यार, हाया नहीं यार, बराबर है ना बेटा. तो अपने को उसके लिए तो रेस्पेक्ट है. मैं सच्ची बोल रहा हूं आपको, सीए इंटर पास होने के बाद आपके रिलेटिव्स ये सब जो भी है ना, टाइम पास लोग अपने आसपास, सब टाइम पास लोग ही है. क्योंकि रिलेटिव्स ऐसा लोग हैं जो वेट करते रहते अपन कब फेल होते. नहीं, not everybody, but sometimes it happens, no. See, I came to CA course not by choice, but by chance. When I was doing my 10th intermediate when I was doing 11th and 12th, I didn't like science, so I came to commerce. When I came to commerce, somebody gave a motivation session to me and told, CA एक अच्छा कोर्स है, CA में ऐसा होता है वैसा होता है, बाद में फुल पैसा कमाए होते, साइन करो बस, पैसे ही पैसे. सब सुने ना आप लोग भी ऐसा. ये सब सुन के मुझे लगा यार, दो ही तो लेटर है, CA, चलो अच्छा है करते करके मैं एंटर हुआ CA में. And when I wrote my CA foundation attempt, I got 140 out of 200. तब 200 मार्क ही था, 200 में 140 आया. लाइफ में पहली बार देखा पास विद डिस्टिंक्शन. मैं इतना खुश हो गया नेक्स्ट लेवल. क्योंकि 10th तक, 10th क्लास माय स्कोर इज 73%. जस्ट ऑनरी स्टूडेंट. So first attempt foundation done. I was so happy that foundation I passed, but all my relatives are completely in shock. बोलते ना shocked, rocked, वैसा ही सीन था. पूरे शॉक, ये कैसा सीए फाउंडेशन पास कर लिया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए. सबका चेहरा देखने लायक था, मतलब शॉक पे शॉक. एंड वन अंकल वाज देयर, ही टोल्ड मी, अरे फाउंडेशन ही तो पास हुआ ना भाई, पिक्चर अभी बहुत बाकी है, इंटर करना है, फाइनल करना है, तब बात करेंगे. Exactly 1.5 year later, I wrote my inter. That was first attempt. तब 1.5 year के बाद ही लिखने का कॉन्सेप्ट था. तो 1.5 year के बाद इंटर लिख दिया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया, दोनों ग्रुप एक साथ. फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया मैंने, दोनों ग्रुप एक साथ. फिर से सब शॉक, और इस बार डबल शॉक कि ये फाउंडेशन तो ठीक है, लक में पास हो गया. बोलते ना यार, फाउंडेशन लक में पास हो गया. इंटर में किसी बाप भी नहीं बोलता कि लक में पास हुआ. इंटर में कैसा लग रही, इधर 9 महीने इधर मरवा के अपन काम कर रहे, और फिर अपन इतना मेहनत करके एग्जाम लिखेंगे, फिर कोई बोल रहा है लक, तू आके लिख, लक दिखा फिर. अरे बराबर है ना यार, अपनी मतलब फ्रस्ट्रेशन बाहर आती है, बिकॉज 9 months ऑफ एफर्ट. शुभ बोल रहा है सर अभी तक तो हुआ नहीं, मालूम पड़ेगा 2-3 महीने जाने दो, फिर आपको मालूम पड़ता है कि सुबह से शाम तक बैठना क्या होता है, और सुबह से जो वर्ड सुन रहे कंसिस्टेंसी, उसका एक्चुअल मीनिंग तब मालूम पड़ता है. कंसिस्टेंसी, समझ में आ रहा बेटा. पहले स्टार्टिंग में 1-2-3 दिन सब मजे लगता है बेटा, बाद में जब एक्चुअल में सीन चालू होते ना, तब अपने को सिंसियरली काम करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट योर माइंडसेट शुड बी वेरी क्लियर कि बॉस अपने को ये करना है तो करना है. If that is clear, it will happen. तो when I inter passed first attempt both the groups, फिर आया फाइनल की कहानी. Sir, 1.5 year again gap was there, and I wrote CA final, and CA final I wrote group wise, first group एक, उसके बाद second group, and that also I passed in the first attempt. First attempt I passed all the levels of CA by God's grace and faculty support. I passed in the first attempt, and the same uncle who told me at CA inter, वो यही बोले थे, CA inter pass. मेरे अंकल बोले, अरे इंटर ही तो पास हुआ मेरे भाई, अभी तो है असली पिक्चर बाकी है, फाइनल है. And the day when I passed foundation result, my dear friends, he came to my home with a flower bouquet and gave it to me and told congratulations. मैंने बोला अंकल पास हो गया. बोला अरे मालूम था बेटा, मेरे को day 1 से पता था कि तू सीए बनेगा. अरे यही आदमी जब मैं फाउंडेशन लिखा और इंटर लिखा तब ये बोल रहा है तू सीए बनेगा क्या, और अभी डायलॉग क्या है बेटा, मुझे पहले से मालूम था कि तू सीए बनेगा. देखो शब्द कैसा बदल गया, और ये क्यों बदला, क्योंकि अपन सीए बन गए. अगर अपन नहीं बनते तो क्या बोलते थे डायलॉग, मैं पहले से ही बोल रहा था तेरी बस की बात नहीं है, तू इच नाटक करके सीए बनेगा, ऐसा गया ना, क्या हुआ, ऐसे डायलॉग आएगा ना. अपन पास होते डायलॉग क्या चेंज हो गया, अरे मालूम था बेटा, तू कितना होशियार है, हमको नहीं मालूम क्या. ऑल डायलॉग्स विल चेंज. So all dialogues, all statements is purely based on our circumstances, what we create. If we are achieving, statement will change. If we are not achieving, statement will change. तो अचीव करना अपने हाथ में, तो अपने रेस्पेक्ट उधर से बनती है बॉस, अपनी रेस्पेक्ट बनती है उधर से. बिकॉज माई पेरेंट्स नेवर थॉट आई विल बिकम ए सीए. मैं जब सीए लिया वो खुद शॉक हो गए, ये मेरे बेटे के बस की बात है या नहीं है, बट दे वर आल्सो शॉक्ड बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट आई पास्ड.
बट दे फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज बेटा सीए बन गए तो ऑब्वियसली खुश होंगे ना यार, और उनसे खुशी से ज्यादा अपने लाइफ में क्या चाहिए, बाकी सब तो बाढ़ में गए, बट पेरेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट फ्रेंड्स, अग्रीड? So you guys have chosen a great course, and for doing great course you require great effort. समझ में आ रहा है सबको? Everybody, sir? Yes. So what are the 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. ये 5 को क्या बोलेंगे हम? Heads of income. 5 heads of income. In income tax we don't tell 5 types of income. We will call it as 5 heads of income. ये 5 हेड्स ऑफ इनकम बेटा हम जब निकालते कंप्यूटेशन, सैलरी का फिगर आ गया, हाउस प्रॉपर्टी का फिगर आएगा, पीजीबीपी का फिगर आ गया, कैपिटल गेन्स का फिगर आ गया, फिर क्या है बेटा? इनकम फ्रॉम। जब पूरा मिलके जो कैलकुलेट करेंगे बेटा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम. So gross total income is a combination of all 5 heads of income. Getting my point? What are the 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. और हर एक हेड ऑफ इनकम में फॉर एग्जांपल सैलरी पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लगेगा, हाउस प्रॉपर्टी के लिए 4-5 दिन लगेंगे, पीजीबी के लिए 10 दिन लगते हैं, क्यों बड़ा टॉपिक है, कैपिटल गेन में 5-6 दिन लगते हैं, अदर सोर्स 2-3 दिन में हो जाएगा. तो एक एक हेड ऑफ इनकम पढ़ने के लिए अपने अपने एफर्ट लगेंगे. समझ में आ रहा है ना बेटा? अदर सोर्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कोई अपने को गिफ्ट दिया वो भी टैक्सेबल है. कितना टैक्सेबल है उसका एक लिमिट है, किस केस में टैक्सेबल नहीं है उसका भी एक लिमिट है, वो सब पढ़ेंगे हम. बहुत मजा आएगा यार. आई एम टेलिंग यू, यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट लाइक एनीथिंग बिकॉज इट्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल, very very practical. You're getting my point? Most practical subject is taxation, so you will enjoy like anything in the classroom, and I'll ensure you will get all the practical knowledge for sure. एक क्लास के बाद आप आपके रिलेटिव्स का रिटर्न फाइल नहीं करते तो पूछो मेरे से, ठीक है ना? चलो, what are the 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. All 5 heads of income when we combine, what do we call it बेटा? Gross total income. इस gross total income से क्या करते हैं बेटा? There is something called deductions under chapter 6A. Friends, in income tax totally there are 298 sections and 14 chapters, and I'll tell you very clearly, आपको 298 sections पढ़ने की जरूरत नहीं है. अपने syllabus में almost about 70-80 sections है या 100 sections है, and in the class we are going to learn with section numbers only. You can just check with any of your friends who were there in my previous classes. They will tell you what is the power of sections. If you have sections, you will remember in the mind. Without sections, concept will go in air. Because you know that in subjects like law, when I say law, be it company law, be it other law, be it income tax law, when it comes to law, you have to learn with section. CA final exam, writing section number is mandatory. CA inter, it is not mandatory, but still it's better always you write. And ICA material, ICA suggested answer, ICA past exam papers, everywhere presentation they give along with section number only. When you learn with numbers, you become more perfect. So school में आपको roll number क्यों दिए? Easy for identification. Section को number क्यों दिए? Easy for identification. आपको सबको WRO number है ना? WRO, SRO, whatever it is, whichever region you belong to, number क्यों दिए? अब मेरे पास भी एक नंबर है बेटा, membership number. अगर मैं इंस्टीट्यूट को फोन करके बोलूंगा CA इंस्टीट्यूट, हेलो शिवतेजा हियर, वो बोलेंगे कौन? I will call and tell membership number 226729. Yes sir, please tell me. फर्क है ना बेटा? Because we are recognized based on number what we have got. Clear friends? Now, deductions लेंगे chapter 6 के अंदर. ये deduction का मतलब क्या होता है? Income tax has given some benefits where they told, for example, एक बंदे का अगर 10 लाख का इनकम है, कितना इनकम है? उसने क्या किया? 1 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस पे किया. क्या पे किया बेटा? इनकम टैक्स बोल रहा है बेटा हम तेरे को कुछ डिडक्शन देंगे, मतलब 1 लाख जो तू इंश्योरेंस पे किया वो माइनस कर दे, बाकी जो 9 लाख रुपए है ना तू सिर्फ इसी पे टैक्स पे कर. समझ में आ रहा है? ये डिडक्शन में पूरा लिस्ट है, किस किस को डिडक्शन मिलेगा वो पूरा पढ़ना चाहिए अपने को, ठीक है ना बेटा? आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन नाउ, थिंक प्रॉपरली एंड टेल मी. लॉजिक सोच के बोलो, लॉजिक से बोलो. सर शिवतेजा, I earned, let us say 25 lakh rupees.
out of 25 lakh rupees, 15 lakhs I purchased one necklace for my wife. Example. ठीक है? अभी बैलेंस कितना है बेटा? मेरे पास सिर्फ 10 लाख ही बचा. अब मुझे बोलो, जब मुझे इनकम टैक्स पे करना है, किस पे पे करना है मुझे? बोलो. 25 पे भरना है, 10 पे भरना है? अरे 15 लाख तो नेकलेस में गया ना यार. वाइफ लेना, बीवी लेके गया ना 15 लाख में. हाँ, पर्सनल यूज. इनकम टैक्स वाला बोल रहा है, मैं बोला क्या तेरे बीवी को देने के लिए? अरे बराबर है ना यार. इनकम टैक्स बोल रहा है तू 25 लाख पे टैक्स पे कर. अगर तू 25 लाख कमाया, तू अगर पूरा का पूरा 25 लाख में नेकलेस लिया, स्टिल यू पे टैक्स ऑन 25 lakhs because the 15 lakhs is your clearly personal expenditure. Yes or no, my dear friends? Did income tax ever tell buy a necklace? No. आप ये बोल सकते सर इनकम टैक्स ये भी तो नहीं बोला कि लाइफ इंश्योरेंस ले लो करके, बट इनकम टैक्स ये बोला अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लिए तो हम आपको बेनिफिट देंगे. अभी आप पूछ सकते सर किस किस में बेनिफिट आएगा? दैट वी विल लर्न इन डिडक्शंस चैप्टर. सर आपको सिलेबस में क्या है समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट ऑफ द क्लास आई एम एक्चुअली मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि अपने सिलेबस में क्या क्या है ये पता होना चाहिए ना यार, तभी तो आगे कुछ करेंगे. अभी ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट डे क्लास के बाद अपने आपको लगेगा यार क्लास एकदम मस्त था, पर सिलेबस में क्या है हमको तो नहीं पता. दैट कैन नॉट बी हैपन, राइट? अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? चलो बेटा, व्हाट आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम? सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस. जब ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम कंबाइन करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम. उसमें से क्या लेस करेंगे? डिडक्शंस. डिडक्शंस आर गिवन अंडर चैप्टर 6A. कितना डिडक्शन से क्या है, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है ना बेटा? ये डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा इसको हम बोलेंगे बेटा टोटल इनकम. गुड, स्मार्ट लोग हैं यार मेरे पास. गुड. So when do you call total income? After deductions. Before deductions को क्या बोलेंगे? Gross total income. और अभी बेटा मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूं कि टैक्स रेट्स क्या है इंडिया में. कितना तक टैक्स नहीं है, कितना तक 5% है, कितना तक 20% है, कितना तक 30% है, वो सब टैक्स रेट क्या चलेगा कल डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. क्लियर? नाउ दैट टैक्स रेट्स यू विल अप्लाई ऑन व्हाट? अगर समझो सर ये ग्रॉस टोटल इनकम आपका 10 लाख रुपए, डिडक्शन 1 लाख है, टोटल इनकम कितना है? 9 लाख. अभी आप टैक्स रेट्स किस पे अप्लाई करेंगे? 9 लाख पे अप्लाई करेंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टैक्स इज कंप्यूटेड as a percentage of total income and not as a percentage of gross total income. Ultimately, a person is required to pay tax on total income. He is required to pay tax on what income, sir? Total income. Total income means after deduction. Deduction will reduce from gross total income. Gross total income कैसा आएगा? From 5 heads of income. 5 हेड ऑफ इनकम अपना 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 कंप्यूटेशन करो, पूरा का टोटल करो, आपको आएगा ग्रॉस टोटल इनकम. उसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे, फिर आएगा अपना टोटल इनकम, और टोटल इनकम पे हम टैक्स निकालेंगे. सबको यहां तक समझ में आया बेटा? एवरीबॉडी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन नाउ. थिंक प्रॉपर्ली एंड टेल मी, इफ अ पर्सन हैज गॉट इंटरेस्ट इनकम, व्हिच हेड ऑफ इनकम विल यू शो? कैपिटल गेन कैसा बेटा? क्या बोल रहा है भाई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है? मैंने 5 साल पहले रिलायंस का शेयर खरीद लिया और आज बेच दिया, मुझे प्रॉफिट आया. कैपिटल गेन्स. आई परचेज वन प्रॉपर्टी 5 years बैक, आई सोल्ड नाउ एंड आई गॉट सम प्रॉफिट. कैपिटल गेन्स. अरे कैपिटल गेन्स है ना बेटा, प्रॉपर्टी बेचा ना बेटा. नेक्स्ट, मेरा हैदराबाद में एक घर है जो मैं किराए पे दिया, उस पर रेंट आ रहा है मुझे, हाउस प्रॉपर्टी. तो आपको दिमाग सीधा बोलना, हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या जाएगा? रेंट, नॉट गेन. अगर घर पे रेंट आ रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी, घर बेच दिए कैपिटल गेन्स. समझ में आ रहा है? बोलो बेटा. अब आप मुझे बोलो, ये बिल्डिंग में 3rd फ्लोर में कुछ कैंटीन है, कैंटीन वाले बिजनेस कर रहे हैं अपना, तो उसका इनकम कहां दिखाएंगे आप? पीजीबीपी. अरे यार ये सर नो सर, जो जॉब कर रहा है, सैलरीज. So what are the 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP,
capital gains, income from other sources. When we combine all 5 heads of income, what do we call it, my dear friends? Gross total income. और बोलो बेटा gross total income में से क्या reduce करेंगे बेटा? Deductions. Deductions are given under chapter 6A. Once we reduce the deductions, what do we get? Total income. We will calculate tax on total income. Clear है बेटा? Everybody sir? तो दोस्तों आपके सिलेबस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी है, रेसिडेंशियल स्टेटस भी है, ये सारे हेड्स ऑफ इनकम भी है, डिडक्शंस भी है. एंड यू हैव गॉट 1-2 स्मॉल चैप्टर्स लाइक क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस. भाई छोटे छोटे चैप्टर्स है. सेट ऑफ लॉस का मतलब समझ गए आप लोग? सेट ऑफ लॉस का मतलब क्या है समझो. शिव तेजा के पास 2 बिजनेस है, बिजनेस 1, बिजनेस 2. बिजनेस 1 में 50 लाख प्रॉफिट है मेरे पास, बिजनेस 2 में 30 लाख का लॉस आया. गवर्नमेंट बोल रहे हैं शिवा रो मत भाई, सेट ऑफ कर दे, बचा कितना बाकी, इस पे टैक्स पे करना भाई. समझ में आ रहा है क्या? बट ये सेट ऑफ करने के लिए अपना अपना रूल्स है, जो अब वो चैप्टर में पढ़ेंगे. समझ में आ रहा है? और एक चैप्टर है अपने पास नेम्ड एज क्लबिंग ऑफ इनकम. क्लबिंग क्या होता है सर? शिव तेजा, आई हैव गॉट 1 माइनर चाइल्ड. एक्चुअली या I've got 1 minor child. Minor मतलब पता है ना आपको? Don't tell lunatic, idiot, unsound. अरे control. Who is minor? Underage. Underage? Ah, exactly. So minor, my chotu, sir, my chotu, my son, minor. My minor has got some income. Law is telling if minor has got income, Shivateja, you pay tax. Because income tax says minor income is clubbed. Is what sir? Clubbed. In the hands of that parent whose our income is higher. पापा का इनकम ज्यादा है तो उसमें ऐड कर, मम्मी का इनकम ज्यादा है उसमें ऐड कर. इनकम टैक्स ऐसा क्यों बोल रहा है? किसका ज्यादा है वहां पे ऐड करो. स्टार्टिंग टुडे वी लर्न टू नो इनकम टैक्स इज व्हाट इन नेचर? प्रोग्रेसिव इन नेचर. जिसका इनकम ज्यादा है मतलब उसका टैक्स ज्यादा आ रहा है ना भाई. तो इधर छोटू का इनकम पापा में ऐड कर दे तो टैक्स और बढ़ेगा ना. अरे बहुत होशियार लोग है यार ये. इनकम टैक्स वाले बहुत होशियार है, मतलब ऐसे कुछ नहीं बनाते ये लोग. हर प्रोविजन के पीछे एक लॉजिक बनते आ रही है लोग. समझ में आ रहा है क्या? एवरीबॉडी सर, ऑल ऑफ अस माय डियर फ्रेंड्स, पक्का क्लियर? राइट. नाउ अ क्वेश्चन गाइस, थिंक प्रॉपर्ली हियर. लिसन, ऑनलाइन में एक क्वेश्चन आया. सर, इफ मिस्टर ए सेल्स हिज हाउस फॉर 10 लाख व्हिच ही परचेज्ड फॉर 6 लाख. गुड क्वेश्चन. सर ये बोल रहा है ही सोल्ड फॉर 10 लाख, ही परचेज्ड फॉर 6 लाख. वो पूछ रहा है कैपिटल गेन कितना है सर? बोलो कैपिटल गेन कितना होता? 4 लाख. ऑब्वियसली सर कैपिटल गेन मतलब नेट प्रॉफिट ना यार. पर कैसा कंप्यूट करेंगे बाद में बात करेंगे. सर हर चैप्टर ऐसा, चैप्टर का नाम ऐसा लगेगा अरे क्या है उसमें, बिजनेस इनकम बनाओ, P&L, हाउस प्रॉपर्टी, रेंट कितना है देख लो, कैपिटल गेन, सेल प्राइस, परचेज पे निकालो. अगर इतना ही सिंपल है तो इतना एफर्ट क्यों लेते हैं यार अपन? करेक्ट नो यार? तो 2 महीने का एफर्ट मतलब 60 लेक्चर क्यों पढ़ेंगे अपन अगर इतना ही सिंपल है तो? ठीक है ना बेटा? और थोड़े दिन बाद लगेगा आपको अरे इनकम टैक्स में बहुत प्रोविजन है सर, बहुत सेक्शन है सर, बहुत पढ़ने का है सर. आपको ये सोचना चाहिए कि जितना ये क्रेजी है उतना अपने लिए अच्छा है. क्यों बोलूं? अगर ये बहुत ही सिंपल है तो कोई बंदा अपने पास क्यों आएगा? अगर हर बंदा अपने अपने डॉक्टर है, डॉक्टर पास क्यों जाएगा? अरे बराबर है ना यार? उसको जितना समझ में नहीं आता उतना अपने लिए अच्छा है. और अपन भी उसको आधा आधा जवाब देना, पूरा देना नहीं चाहिए. पहले पूरा फीस, उसके बाद पूरा आंसर. अरे बराबर है ना यार? अगर कोई क्लाइंट अपने पास आए उसको बोल देंगे क्या भाई तो बैठ ना भाई, फीस बाद में देख लेंगे, पूरा सर्विस ले ले पहले. नहीं, ऐसा थोड़ी होता है. उसको जितना ज्ञान देना उतना ही ज्ञान जेपने का, जितना उसको समझ में नहीं आता. बाकी चीजें समझना है तो बैठ, तू मेरे से फीस ले फिर काम करा. अरे सर मजाक नहीं है यार. सीए का एफर्ट, इट्स नॉट अ जोक राइट? वी आर टेकिंग सो मच एफर्ट इन आवर लाइफ टू डू समथिंग बिग, देन ऑब्वियसली आफ्टर दैट व्हाई विल यू सैक्रिफाइस? बराबर है ना? अगर आपके पास कोई आके बोलते भाई एक साइन देना इधर, तो कर देंगे साइन, टक 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 टक. सीए बनने के बाद आवर साइन इज नॉट अ साइन, इट इज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बोलेंगे ना वो टाइम पे सिग्नेचर, अपने साइन की वैल्यू बढ़ेगी ना बेटा सीए बनते ही. बेटा बोलो ना यार. एवरीबॉडी फ्रेंड्स, चलो गाइस कम ऑन, टेल मी नाउ what are the 5 pillars of democracy? Legislature, executive government, judiciary,
Press, Comptroller and Auditor General. Legislature, what do? Frame the laws. Executive government implements the laws. Judiciary interprets the laws. Then press echoes public opinion. Last one, watchdog for public funds. Clear, beta? Everyone, sir. What are the 5 sources of income tax law? Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962, Annual Finance Act, Circulars and Notification, Judicial Pronouncements. Tell me guys, who gives circulars notifications? CBDT. What does CBDT stand for? Central Board of Direct Taxes. ये Finance Act कैसा आएगा बेटा? From budget. Budget कैसा सीधा एक्ट बनेगा? Budget क्या बनेगा? Finance bill. कैसा? Lok Sabha and Rajya Sabha. Then the bill is approved by President, technically called as assent. Assent of President becomes Finance Act. कितने साल आएंगे ये Finance Act? हर साल. अपने एग्जाम के लिए क्या एप्लीकेबल है? अपने एग्जाम के लिए Finance Act 2023. बराबर है बेटा? How many heads of income are there? 5 heads. देखो पूरे 5 है. 5 heads of income. What are 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP, capital gains, income from other sources. All 5 heads of income combined together, we call it as gross total income. From gross total income, we reduce what? Deductions under chapter 6A. Chapter, ये आपको कल लिखा होगा, टेंशन मत लो. Chapter 6A. Deductions minus करने के बाद क्या बोलेंगे बेटा उसको? अभी हम जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे किस पे निकालेंगे? जीटीए पे निकालेंगे या टीआई पे निकालेंगे? TI. Because tax is always a percentage on total income. Tax is not a percentage of gross total income. Tax is a percentage on total income. अभी बेटा 5 sources में सबसे पहला source क्या है बेटा? Sources बोला मैंने बेटा. Income Tax Act. ये act में बेटा there are so many sections. And lot of sections have got subsections. And many a time, subsections will have clauses. Lot of times, clauses will have, and many times below the section, you will find sometimes proviso. What is proviso? Nai, proviso is like an exception against the basic rule. Proviso is something like an exception. Proviso is not like a condition beta. Proviso is something like an exception. Exception मतलब against the basic rule. Against the basic rule. For example, हमने बोल दिया basic rule just हर संडे छुट्टी मिलता है normally. But कभी ऐसा हुआ कोई weekday में क्लास नहीं हुआ या कभी कुछ हुआ है कि अपने को urgent से emergency है क्लास लेना है. That's like an exception. समझ में आ रहा है क्या बेटा? That is called proviso. Provided that, provided also that, provided further that. समझ में आ रहा है? Provided बोलते बोलते उसमें. Some people will tell it as condition, but instead of condition, preferably what we say is exception. Provided that this is there, provided also that this is there. Condition or exception. Getting my point? And sometimes in law, you will also find explanation. मतलब सेक्शन के नीचे explanation लिखते हैं कभी-कभी. इसमें ये explanation है. Clear है बेटा? So in our classes, we are going to learn various subsections, various sections, various clauses. We will learn various subclauses. We will also learn provisos. We will also learn explanations. सबको clear है? Everybody, sir? Now what is Jan to December, beta? What do we call Jan to December as? Calendar year. Now what is year meaning? Period of 12 months. Jan to December means calendar year. But, what we follow in income tax or what we follow in accounting is only what, sir? Financial year, which is April to March. 1st April to, there was a time where people used to maintain books of accounts from Diwali to Diwali, Valentine's Day to Valentine's Day, girlfriend's birthday to same girlfriend birthday, not another girlfriend. So people maintain books of accounts in whatever way they want. But lot of years back, they made a rule that everybody has to follow uniform financial year.
uniform financial year, which is nothing but April to March. सबको clear है यहाँ तक? Everybody, sir? So what are the two types of taxes? Direct tax and indirect tax. Direct tax means what? Direct tax is the tax where impact and incidence is on same person. Indirect tax is the tax where impact and incidence is on different person. What is Article 265? No tax shall be levied or collected except by authority of law. Bolo beta, how many heads of income are there? 5 heads. Bolo kya naam hai? Salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. PGBP का full form क्या है बेटा? Profits and gains from business or profession. सारे heads of income combine करेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा उसको? Gross total income. उस पर से हम क्या लेस कर सकते हैं? Deductions. क्या क्या डिडक्शन से क्या है बाद में पढ़ते हैं उसको, अभी जल्दी नहीं, आराम से पढ़ते, फर्स्ट डे है ना, टेंशन नहीं. डिडक्शन माइनस करने के बाद क्या आएगा? टोटल इनकम. अभी जो हम जो टैक्स निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे? टोटल इनकम पे निकालेंगे. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? इज जीएसटी पेड ऑन टोटल इनकम? जीएसटी इज पेड ऑन टर्नओवर. इनकम टैक्स इज पेड ऑन प्रॉफिट. प्रॉफिट मींस टोटल इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग डिडक्शंस. क्लियर एवरीबॉडी? Direct tax is a tax where impact and incidence is on. Indirect tax is on different person. Indirect taxes are what in nature? Regressive in nature. Indirect tax pucha maine. Direct taxes are progressive in nature. Clear? Last question for the day. What are the 5 sources of income tax law? Income Tax Act. Sab log, come on. Income Tax Act 1961. Income Tax Rules 1962. Annual Finance Act, circulars and notification. Judicial pronouncement. Judicial pronouncement means rulings of High Court and Supreme Court. Circulars and notifications are given by CBDT. CBDT stands for Central Board of Direct Taxes. सबको क्लियर है? आज जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े सबको समझ में आया बेटा? पिक्चर अभी बहुत बाकी है, तो बहुत काम करेंगे बेटा. We'll have some great learning. And in the class, 2 things are very important. That is, one thing, we will do a cumulative revision in the class. We'll keep on revising. Second day, I'll revise what we've done on first day and second day. Third day, I'll revise what we've done on 3 days. After 20 days, I'll revise what we've done in 20 days. That level of extensive revision we'll do. जिससे हम थक जाएंगे, फिर भी रिवाइज करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, फिर थक जाएंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनर्जी अपने आप आ जाएगा. आ जाए. कैसे आ जाएगा मैं देख लूंगा वो. ठीक है ना बेटा? And in the class, one last thing is that we will write test in the classes, and the test will be cumulative exams. When I say cumulative exams, once first chapter is over, I'll conduct exam on first chapter. Second chapter is over, I'll conduct exam on first and second. Third chapter is over, we'll write exam on 1, 2, 3. So that way, we'll keep on writing cumulative exams. Because भगवान ने छोटा सा दिमाग दिया ना, तो निकल जाते रहते हैं, तो उसको संभालना पड़ता है कि भाई रुक जा, इधर ही बैठ जा, तू जा मत, सेक्शन ये है, तू जा मत. 265, 246, entry 82, yes, income tax. Correct, no? So that level of perfection will come. That will take some time. Good things will take time. Overnight things will not happen. It will take some sweet time. But we will ensure that we will do the best. Clear? So don't worry guys, you are in the safe hands. I'll ensure that you get the right and best subjects. Clear everybody? But what is most important is I want 100% attendance in the classroom. Physically, once you are there, mentally I will take care. मैं आपको कुछ भी सोचने भी नहीं दूंगा, कुछ भी चीज, क्योंकि आपको गैप ही नहीं दूंगा मैं सोचने के लिए. वो मेरा काम है. बट रोज क्लास के अंदर तक आने का आपका काम है. एंड whoever have joined for face to face, to the extent possible, come for face to face only. ठीक है ना? बिल्कुल मत सोचो कि घर पे बैठ के YouTube में देख लेंगे, कुछ करेंगे. बॉस कितना भी बोलो, फेस टू फेस का फेस टू फेस है. बराबर है ना? Thank you so much guys. Have a great balanced day, and I wish you all success for your entire journey of CA Inter, for all the classes. Have a good time. Enjoy your learning. Enjoy the process. Trust the process. Results will come. Thank you so much beta. Take care. Thank you guys. Bye bye. And I'm sure you enjoy the class today. Everyone absolutely. Totally guys. Thank you so much friends. Bye bye. Online friends. See you. Signing off. And no feelings and emotions. Only sections and subsections. That's it. Thank you.
अबे आपका लंच ब्रेक है ना अभी, वो लाइव स्ट्रीम भी ऑफ कर दूं, हो गया ना? तो अभी तो आपका लंच ब्रेक है and your next class will be costing, correct? Yes. So have a good time, guys. Enjoy the day. And one thing, please keep in mind that you have come here all the way for some purpose. Purpose पहले fulfill करो. पुणे में मस्ती टाइम पास तो बहुत होता है. Pune is happening place, but ensure that you guys have come for a purpose. पहले वो fulfill तो करो. उसमें तो कोई compromise मत करो. Sincerity के साथ day 1 से मेहनत करते रहना, तो अपने आप काम हो जाएगा. ठीक है? और स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पूरा दिन में क्लासेस होने के बाद कितने घंटे बैठ के पढ़ना चाहिए? मैं बोलने के लिए बोल दूंगा 4-5 घंटे बैठो. भाई नहीं होगा यार, 1 घंटा भी नहीं होगा. बिकॉज अपने पूरे शाम में क्लास जब तक खत्म हो तो 7:30 बजेगा यार. उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ टाइम भी मिलेगा. यू जस्ट स्पेंड 1 hour टाइम एंड गो थ्रू व्हाट यू डन इन द डे. हो जाएगा काम. ठीक है ना? डोंट टेक प्रेशर, डोंट टेक टेंशन, बट पुट द एफर्ट्स. ठीक है? एनी सपोर्ट, एनी हेल्प, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. एंड एनी डाउट्स, एनी टाइम, feel free to come back. During class, if you have some doubt, you can ask. And after a break also, if you want to ask, you can ask. Okay? Let's enjoy the subject of tax. Thank you.